Hello, hello, hello. 1 2 3 4. Hello, mic testing. 1 2 3 4. Hello. मत कर. Hello, hello. 5 6 7 8 9 10. Yeah.
Please, audience, please have a seat. At the G20 Summit 2023, to which India became host to, it was agreed by all that education is a key driver of sustainable development and economic growth. The G20 is dedicated to advancing education systems that are equitable, inclusive, and equipped to meet the demands of the 21st century. A very pleasant morning to our esteemed guest, respected Principal Ma'am, fellow faculty members, and everyone in attendance. It was recently observed that global platforms like the G20 Summit generates a wealth of information, reports, and educational resources that can enrich college courses and teacher training programs. College professors and teacher educators can incorporate materials from summits like these into their curriculum to provide students with real-world examples and case studies of global challenges and solutions. While we at Guru Nanak College of Education have made some strides in the direction of experiential learning, immersive learning experience and simulations, competency based learning strategies, along with an effective integration of technology with the teaching learning process through the use of LMS and MS Teams, there is still much to be done. And in a humble attempt to cover any existing gap, we take pleasure in playing host to the one-day 7th National Conference that was conducted on 30th of July and a week-long faculty development of program from 31st of July 2024. We are delighted to share with you all that Guru Nanak College of Education, through its week-long FTP on the most relevant and recent theme, that is G20, One Earth, One Family, One Future, achieving through quality education today on its fourth day, is going to play host to the experts in the field of education. Ladies and gentlemen, today we have amongst us Mr. Vinay Kaushik, Deputy Secretary, DSSSB, and our resource persons who will be joining us shortly for the scheduled technical sessions. And with, of course, with the unconditional support of the distinguished members of our parent body, Delhi Sikh Gurdwara Management Committee, who are connected with us on the live stream. We are streaming live, sir, on YouTube. Blessings of Vice Chancellor, Sir Padma Shri Awardee Professor Dr. Mahesh Verma ji, and constant support from Guru Gobind Singh Indraprastha University, our honorable special guest for today's technical session, respected members of our college governing body, ladies and gentlemen. It is both an honor and a pleasure to welcome you all to the fourth day of the week-long faculty development program. This brings us to the auspicious moment of inaugurating today's event. To auspiciously move forward with the planned proceedings of the day, I would like to humbly invite our esteemed guest, Mr. Vinay Kaushik ji, along with Principal Ma'am, Dr. Jyoti Bala Ma'am, to kindly light the lamp and inaugurate the event. It is said, light the lamp of love in your heart, the lamp of abundance in your home, the lamp of compassion to serve others, the lamp of knowledge to dispel the darkness of ignorance, and the lamp of gratitude for the abundance that the divine has bestowed on us. As Mr. Kaushik ji, along with our principal ma'am, is lighting the lamp,
This is a very memorable moment for us, marking the inauguration of the fourth day of the ongoing faculty development program. As we proceed with the lighting of the lamp, let me take a moment to express our gratitude to our honorable members of Delhi Sikh Gurdwara Management Committee, our privileged guests, respected resource persons who will be joining us shortly. All of your presence today enriches this gathering and sets a high standard for the discussion that will follow. I also wish to extend our heartfelt appreciation to the organizing committee, Sardar Rajinder Singh Ji, Chairman Guru Nanak College of Education, Sardar Surjit Singh Ji, Manager Guru Nanak College of Education, and Dr. Jyoti Bhalla Ma'am, Principal, Guru Nanak College of Education, who is also the convener of this FDP, as well as all the volunteers who have worked tirelessly behind the scenes to ensure that this FDP is a success. And with this, we conclude the lamp lighting ceremony. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਫੈਕਲਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ। ਤੁਧ ਬਿਨ ਸਿੱਖਣਾ ਸਤਸੰਗਤ ਸਾਚਾ ਵੇਸ, ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਸੰਗਤ ਹੀ ਸੱਚਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸੱਚੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਚੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਡਿਵਿਨਿਟੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਲਈ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋ ਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਕੱਤਰ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਰਦਾਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਨਾ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਰਦਾਰ ਜਸਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੋਨੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। A very good morning to you, Shalini ma'am. Very good morning. So, ladies and gentlemen, we also have one houses already arrived. Can we have a huge round of applause for Shalini Yadava? So, as we were having a felicitation ceremony, so as we celebrate these remarkable accomplishments, I'm reminded of a quote by Nelson Mandela. What counts in life is not the mere fact that we have lived it. It is what difference we have made to the lives of others that will determine the significance of the life we lead. Each of our honorees have made a significant difference with their efforts and which remind us that greatness is not just about personal achievement but also about the positive impact that we create for others. We would now like to present a small token of love and appreciation for our esteemed guest for today, Mr. Vinay Kaushik, for which I would like to request our guest as well as Principal Ma'am to kindly come up on stage and accept a small token of love from the Nanak College of Education. Ladies and gentlemen, we have Mr. Vinay Kaushik, sir, Deputy Secretary and People on the stage, receiving a small token of my love towards him. I would also like to humbly invite Dr. Shalini Yadava ma'am onto the stage for the felicitation ceremony. So please take a seat. So we have Dr. Shalini Yadava ma'am, Associate Professor at the University School of Education, Guru Gobind Singh University, receiving a small token of our love and appreciation towards her. But I would like to request Kaushik sir and Shalini ma'am to please take seats on the side of the stage as Principal ma'am will be starting with a small presentation. For a better view, if we can request sir. Oh, yes, yes. I would now like to request our Principal Ma'am, Dr. Jyoti Bala, to stay with us on the lines for a while to share some of her recent experiences, encounters, and anecdotes for the successful journey of Guru Nanak College of Education as we led by Ma'am
for more than 10 years now. Can I have a huge round of applause? What a glorious morning. When I stand before the galaxy of distinguished educationists. Honorable President, Delhi Secretarial Management Committee, Sardar Hardeep Singh Talga ji. General Secretary, Sardar Jagdeep Singh Khalo ji. Vice President, Sardar Atma Singh Lobana ji. Prestigious members of Delhi Sikh Gurdwara Management Committee. Guest, governing body comprising of Chairman Sir, Sardar Rajinder Singh ji, Manager Sir, Sardar Sukhjit Singh ji, our respected guest of honors, my supportive staff members and worthy participants joined us through physical or online mode during this faculty development program on the theme G20, One Earth, One Family, One Future, Achieving Through Quality Education. It is indeed an honor to celebrate the milestones we have accomplished together. I extend a very warm welcome to this enthusiastic gathering looking out for enrichment and development. ऊपर आ जाइए ऊपर ही आ जाइए Established in 2003 by Delhi Sikh Gurdwara Management Committee with the motto Vidya Vicharita Parokari means education brings kindness. Guru Nanak College of Education, with a short yet brilliant history of 20 years, is a pioneer in imparting quality education to foster all-round development of its pre-service teachers. It is a Sikh minority college offering single course Bachelor of Education with an intake of 100 students. Since it is a 2 years program, so altogether we have 200 students. Self-owned by DSGMC, the land use is exclusive for the college only. There is a full power backup with green generator. College is also having fire safety, lift safety, structure stability, earthquake resistant certificates along with NCMEI, ISO, Vental certifications. College has been awarded the highest category grade A by GGSIPU DHE and the same has been maintained consistently for 9 years in a row by the college. The State Fee Regulatory Committee has also upgraded the college from B directly to the highest grade, that is A+, which is a remarkable achievement of the college. Infrastructure facilities include 32 rooms, playground, terrace, subject-wise distribution of students according to pedagogy and elective subjects, air-conditioned classrooms equipped with projectors, smart boards, multimedia computer systems, well-equipped updated labs and resource centers as prescribed by NCTE and GGSIPU, Koha-mediated library fully automated with barcode, e-learning facilities, online subscriptions of Delnet, OPEC, EduSet. College is successfully integrating technology across the curriculum through the readily available teaching learning material on college LMS and various channels for online classes and submission of assignments and record files through MS Teams. College Discipline Committee comprises of several subcommittees to ensure conducive and healthy environment. Presence of a student counseling center with an availability of a psychiatrist, psychologist, and a counselor on board for students' well-being. Fit GNCE. With a mini gym, a regular fitness sessions in the college, our students can access available outdoor and indoor sports equipments to rejuvenate. College has been exploring the ever-expanding frontiers of knowledge that go beyond the curriculum through various co-curricular activities, college clubs and houses to capture the latest emerging trends in new technologies, skills, values by regularly organizing programs and events. I take immense pride in highlighting my students' achievements at GGSIPU Annual First Anu Gonj from striking gold in competitions like extempore, debate, creative writing, quiz, declamation, collage making, silver in competitions like vase decoration, quiz, folk dance, painting, and kirtan competitions. They also actively participate in literary and creative events organized by the university, various gurudwaras, institutions, and colleges.
Adding another feather to our hat, we have the budding authors who have well reflected on their learnings and successfully got their books published across various genres. The college has been organizing thoughtfully designed personality development activities for its students like orientations, mock interviews, role play, group discussions, movie screenings, competitions, industry exposure programs. Next in line, we have a list of schools that we are proudly associated with to ensure enriching preliminary school engagement and school internship experience for our students. Students also imbibe social, cultural, national, and environmental responsibility through programs regularly conducted by the college NSS unit. Outside visits include grand celebrations like Delhi Fateh Divas at Red Fort, Veer Bal Divas at Major Dhyan Chand Stadium, GGSIPU Health Mela at Talkatora Stadium, just to name a few. GNCE Placement Office conducts campus recruitment programs, job fairs, vocational counseling, and placement assistance and referrals. The insight and guidance of experienced alumni of college provide a platform for career prospects, advices, mentorship, and professional opportunities. Under continuing professional development, college has been hosting a number of workshops, seminars, conferences, along with yearly faculty development program, both in online and offline mode, so as to enhance the effectiveness of college family. For this year, 7-day FTP has commenced already going on. And so we may say that college distinctive journey on the path of excellence continues. All of yours unwavering support has been our foundation. So for that, we are deeply, deeply grateful. Thank you all for being the part of this incredible journey. Here is to celebrating our achievements and looking ahead to the exciting opportunities that await us. Let us continue this program. Thank you. Principal ma'am, can we continue with the felicitation ceremony for Anjali? So I would now like to humbly invite Professor Anjali Shokeen ma'am to in the front of the stage to get felicitated by our principal ma'am, Dr. Jyoti Bala. This is just a customary thing, while our respect for you knows no bounds. You know that, ma'am. Needless to say that. Ladies and gentlemen, we have our esteemed resource person of today's technical session 2, Dr. Anjali Shokeen ma'am, Associate Professor, Central Institute of Education, Delhi University, accepting a small token of love and respect towards her. This is a picturesque moment for the Nanak College of Education to be cherished by us forever. And with this, we come to an official end of the inauguration ceremony of the 4th day of a week-long faculty development program and a call to begin with the technical sessions. But before that, I would like to invite our honorable guest for the day, Mr. Vinay Kaushik, onto the dais to share a few words of wisdom with the audience today. Mr. Vinay Kaushik has completed his education in 1988 and has worked with Nirulas as assistant manager till 1990. Sir joined Delhi government in 1990 in Delhi Administrative Subordinate Services and remained on various posts of Education Department, Industries Department, NDMC as Joint Director, Assistant Commissioner in GST, Deputy Director in Higher Education, SDM in Narela and Najakkar subdivisions. Sir is presently designated as Deputy Secretary in Delhi Subordinate Staff Selection Board, that is DSSSB, a dream for many of you sitting here, GNCE of Delhi at Karkarduma. Sir has been constantly contributing to the development, implementation, and evaluation of policies and programs related to higher education. Mr. Kaushik has also supervised and coordinated specific programs and projects within the department, ensuring they meet goals and compliance requirements. Ensuring that the department's activities comply with federal, state, and local regulations and guidelines,
Sir has been tirelessly working to ensure the welfare of all. With this, I would humbly like to invite Sir to the dais. Respected Dr. Jyoti Bala Madam, Principal Madam, Dr. Anjali, Shokeen ji, Dr. Shalini Madam, and dear students. Today we are discussing the topic One Family, One Earth and through quality education. I really think that the most important topic is what is the quality education? Important is quality education nowadays. It is losing its meaning and only through such person, Dr. Jyoti Balla madam, through Shalini madam and through Anjali madam, such person are making the clarity of quality education. This is not only responsibility of an individual to have quality education, but it is also the responsibility of community to give quality education. Once the future and our family, these are the things which we can get success only through quality education. But how to get our success, and once we are getting success, is it your individual success? No, it is the success of our society, our community, and ultimately our nation. Just you are watching Olympics. In these Olympics, who is getting medal? This is not her or his individual achievement. It is the achievement of nation. So what we are discussing today, it is very important topic, and I wish you all should get the clarity of idea. You are having such a wonderful uh, professors with us who can give clarity. I am just from administrative side, so I will also listen the views of our experts. But before starting, I want to clear two, three things. How to get quality education and how one family, one earth through quality education. We have to achieve this thing with 3A. Number one, we have to accept the hardship, and while entering into getting quality education, we must see what are the problems. It may be poverty, it may be uh, social differences, it may be caste differences or social economy. Number two, we have to acknowledge the power of quality education and getting success in our family, in our community, and ultimately on the earth. Thirdly, we must accept the power of today's technology. Only through this, we are getting online platform, digital resources, and innovative pedagogies. Through all these, we can bridge the gap between the quality education and democratize to all the students. In very future, near future, you are going to be practically entering in life, and while dispensing your duties, you must keep this in mind that how to have one family, one earth through quality education. I wish a great success to Dr. Jyoti Balla madam, and I wish to all you to have a great success.
Thank you so much, sir, for laying emphasis on quality education as you spoke and related to the ongoing theme of our event, that is one earth, one family, one future, by accepting our social differences, acknowledging the power of quality education and technology to bridge the digital divide. Thank you once again, sir, so much for your blessings and best wishes for our college and all of us. The summit fosters international cooperation on educational initiatives, encouraging member countries to share best practices, research, and resources. This can lead to improved educational standards and innovative teaching methods worldwide. To further enlighten us on the theme, we will be beginning with the first technical session for today, for which I would like to invite Dr. Shalini Yadava ma'am onto the dais. But before that, it is my duty to read ma'am's profile, and I take immense pleasure in that. Dr. Shalini Yadava ma'am is working as Associate Professor at University School of Education, GGSIP University. Dr. Shalini Yadava ma'am has been a teacher educator for more than 14 years now. She started her teaching career as a biology teacher at Delhi Public School, R.K. Puram, in the year 1998. Her journey as a teacher educator started at DPS Institute of Higher Education, a B.Ed college of Delhi Public School Society, affiliated to Guru Gobind Singh Indraprastha University. After a stint of 6 years as lecturer and officiating for one academic session as the head of this institute, she joined as Assistant Education Officer at the Central Board of Secondary Education, Delhi. Ma'am has worked in this organization in two capacities, that is AEO Regional Office Delhi and AEO Vocational Education and EduSat. This experience provided her an opportunity to work in diverse academic and administrative environments. Her passion for teaching and longing for research made her quit this post after serving this organization for a year. Ma'am then joined as a head of a college at Gurgaon, offering the B.Ed and M.Ed program for 6 months. Before joining the present post, she was teaching BLed students at Shama Prasad Mukherjee College, University of Delhi. Ma'am has been an all-rounder throughout her academic career and has organized and participated in diverse literary and cultural activities. Ma'am has been awarded the Salamat Ullah Gold Medal for standing first in the B.Ed examination of Jamia Millia Islamia University of Delhi. Ma'am was also awarded the JRF by UGC. Ma'am has authored 2 textbooks of biology and published a number of articles, concept papers, research papers, and chapters in magazines, journals, and books, respectively. With this, I would like to invite Dr. Shalini Yadava ma'am onto the dais to start with the first lecture. Thank you, Reha. That's indeed very kind of you. Well, a little correction. My name is written as a A at the end, and it's pronounced as Yadav. है ना पता लगा पूरा जगत ही यादवा बुलाने लग गया तो मेरी उसी वजह ओके yeah sure it's Yadav. It's like Ram. We do in English we write it as RAM, but it's pronounced as Ram. It's okay. Yadav, it's Yadav. But it's written there as that because the kingdom was. Yeah. Whatever. See, मैं ठीक पहन के आई हूँ ना हाँ कुर्ता कैसे आप ठीक ठाक क्या करो और भी कुछ करना है वैसे मेरी आवाज बहुत बुलंद है Oh, going live. Thank you, sir. It's streaming live on YouTube and the link has been shared on Instagram, Facebook. Who's that? Where do I put? चलो हो जाएगा ना सेटिंग अब इसको क्या करना है अच्छा I can stand here but I have to put it If you want to move, then. okay most probably you all are the millennial generation born much after us right
So not only 21st century skills, that's the topic which I would love to deliberate upon. Yeah. All of you understand English? Or do I need to be bilingual? Be truthful. All good? Okay. So 21st century skills, and this is a PowerPoint which was made internationally by the Institute of Museums and Library Services, and it's exceptional one. So I thought instead of changing the language and attributing it to myself, it's no use. So I better use that, except for some of the slides which were not relevant to you, that those have been deleted. Okay. We start with a few questions how learning is going to be in the 21st century, right? When you pass out of an institution, whether it's a school or a college, what will you be expected, right? As a teacher, what skills will the children need to have, right? With reference to when you go out in the world, what are the skills which your employers will be looking for in you? Very, very importantly. And please, when we say 21st century skills, we have a vision of the next 20 years, right? Next 20 years, you'll be in your 40s in all probabilities, right? And we'll be retired. Yeah. So what are the conditions that made your high performing learning experiences so powerful? Right? That means what conditions should institutions give you such that you emerge as those people who are completely skilled with those skill sets, right? Then what would learning be like if it were designed around your answers to the first three questions? The first three questions, what are the skills which you need? What are the conditions in institutions which you need? And 20 years from now, how do we equip you such that you survive the onslaught of this world, right? When I say onslaught, I mean mentally, I mean emotionally, right? You know, these days, the kind of, I would say, crisis which we are facing, whether it's in IITs, whether in other higher education institutions, or whether, you know, the students of quota coaching. Why? The immense pressure of academics and competitive exams, right? And they are ready to lose their lives. I mean, you can just imagine that means we're not equipping them with the kind of skill sets, the kind of life skills which they need, that they buckle down under pressure, right? You also have film stars like Sushant Singh Rajput, right, who were taken away. I don't want to go into the details, but who were taken away way before time, right? Now, for us to grow into individuals who are ready to conquer the world, it's very, very important that you are critical as well as creative, right? And let's start, therefore, with what exactly are the 21st century skills. You know, when I say 21st century skills, first and foremost, remember, when you say skill, that means it can be developed. You may not be born with it, but it's a competency, right? By drill and practice, you can develop it, right? For example, we say driving is a skill. If driving is a skill, why? Because I can learn it, I can develop it, and I can master it, right? So that mastery level learning of the 21st century skills is what we are aiming for. Now, when you say 21st century skills, we have creativity, right? The ability to look at the same thing differently. That's how Shiv Kera looks at it, right? You don't have to be innovative to be creative, but you have to think out of the box. That lateral thinking of looking at things from a different perspective. Yeah. Then collaboration. I'm very sorry to say these days we see whether in higher education faculty or whether in students, there is lack of collaboration. Why? I think we have ceased to understand the meaning of collaboration because we have ceased to understand the meaning of cooperation. Why? Because all we learn, and I don't blame you for that, it is our education system which has taught you that, is competition. When you feel happy, why? Because you have left others behind you, you have surpassed them. Actually, it's something which is unhealthy and negative, isn't it? You are happy because others are behind you. That kind of competition which is fueled, right, that kills the spirit of cooperation, right? So it's very, very important. And unless you are cooperative, you cannot collaborate. Because collaboration means you have to rise above me, mine, myself. So it's extremely important that you learn to collaborate. And when you collaborate, you learn to look at the strengths of different people. You work in groups. You build on each other's strengths.
and you ignore the weaknesses. Yeah, that's what collaboration is all about. Communication. The very fact that I stand before you, right, and you are attentive to what I'm saying, right, speaks volumes with reference to the communication being offered. Yes or no? And please understand, communication, you'll be shocked to know, majorly is non-verbal. When I'm speaking, right, you're looking at my expressions. Of course, those of you who can see me, you're looking at my eye movements. You're looking at my eye contact. You're looking at my hand movement. You're looking at my body language. Yeah. When you're communicating, it's extremely important that your body language is also taken care of. It should be assertive, but it should not be aggressive. Right? You are not charging on people. Right? So communication majorly is non-verbal, and the other part is words, language. You're all future teachers, and some of you are existing teachers. Unless you have a command over language, irrespective of whether it's Hindi, English, Punjabi, Urdu, whatever be the case, or a regional language. For a teacher, you cannot survive in the sense you cannot earn the respect you need unless you are an effective communicator. And effective communication is nothing but whatever I'm saying, encoding, you decode the same. What I say and you understand something differently. Who is to fault? Not you, me. That means I've not been able to explain things in the kind of words, with the kind of examples that you understand. Right? So communication has to be very effective. And remember, for communication also, it's very, very important that all kinds of negative reinforcement are away, whether it's noise. Just imagine if outside this hall there was a loud DJ playing. Naturally, this communication will be disturbed, right? Just imagine if you are really very ill. No matter how hard you try, you will not be able to concentrate with reference to what the speaker is saying. Yeah. Then you have next critical thinking. All of you during your BA program are required to write a reflective journal, right? Right? In reflective journal, you reflect upon what you did in the classroom, right? What did I teach today? How did I teach? How well did it go? What are the problems which I faced? How am I going to solve those problems? All of that requires critical thinking, right? You're not just recording what I did. The what part of it is not critical thinking. Why? How? How do I improve? Right? That part involves critical thinking, right? Looking at a thing from different perspectives, including its strengths and weaknesses, that part is critical thinking. And critical thinking, a major part of critical thinking also involves introspection. Introspecting, while you write your reflective journal, you're introspecting on your own practice, which is very, very important. Yes? So these are considered to be the 4 very, very important C's. If anybody ever asks you what are the 4 important C's with reference to the 21st century skills, it's creativity, collaboration, communication, and very, very importantly, critical thinking. Remember this, right? Moving further, now, when you talk of skills, there are different skills. You know, when you communicate, you just don't communicate verbally, isn't it? Right? You also communicate in writing. You also communicate in, look at this room. You also communicate through sketches. You also communicate through sculpture, so on and so forth. There are so many mediums to communicate, right? So for that, you need different kinds of literacy, right? Visual literacy, right? You need verbal literacy, of course, with words. Then you also need numeral literacy with numbers, right? And please understand, when you talk of learning and innovation skills in 21st century, this is something very, very important. You cannot survive. We all say you should have to be lifelong learners, isn't it? But for being lifelong learners, not only do you need to know how to learn, metacognition. Metacognition is all about knowing how to learn. You have a number of strategies in metacognition, metacognitive strategies, which you use, right, to learn. But the unfortunate part is you are never taught how to learn. You are expected to learn without knowing the metacognition strategies. Am I right? Am I wrong? Yeah. So it's very, very important that emphasis is given with reference what are the strategies which we require to learn, right?
And when you use those strategies, sometimes we just make rhythmic words, mnemonics, right? For example, this is an example which is very close to my heart. While I was growing up, that it was a compulsory, हिंदी की जीवनी कंपल्सरी होती थी, तो उसमें तुलसीदास जी की जीवनी थी और उसमें उनके पेरेंट्स के नाम याद करने थे, राइट? सो हाउ डू आई लर्न? एंड बार बार मुझे याद ना हो तो मैंने क्या किया, आत्माराम एंड हुलसी गेव राइज टू तुलसी. Yeah, I remember it till date. It was class 10. So these are the ways you devise how you learn, right? So another very important thing moving further, cross disciplinary skills, right? Before another thing, you have to learn, but you also need to unlearn. There is many things, with the advance of knowledge pools, it becomes redundant. So you have to unlearn. That's very important. A technology which becomes obsolete, you have to unlearn. You have to move forward, right? Very importantly. Then these are the times where you just can't be discipline focused. I'm not saying don't be discipline focused, but these are times where you ought to be. I'm not saying should be, ought to be interdisciplinary, right? And this is not something new. But how many of us are interdisciplinary? For interdisciplinary, you need to have the length and breadth of knowledge of different disciplines. If you're teaching water to a student in school, right? Those of you who have the discipline of geography or biology and so on and so forth, water is a topic which is very interdisciplinary. You can approach it from different angles. Remember the Kaveri dispute, the economics of water, the geography of water, the history, the sharing of water between the legal part. Yes, the water as a chemical molecule, water as the elixir of life, right? So that approach of interdisciplinarity is very important, right? So you will have to cut across disciplinary boundaries to teach everything, which is very important. And that's what is called being interdisciplinary, right? It's very important. Okay. Then moving further, information, media, and technology skills. The very fact that we are using technology, yeah, I'm communicating through the mic, you're live streaming it on YouTube, right? And I'm using a PowerPoint by the Institute of Library and Museums, yeah. The very fact that technology is aiding me in delivering this lecture, yes or no? So information and communication technology skills in this age, this is the digital age, the fifth technology revolution which we are undergoing, right? So it's extremely important that you're well versed with these skills. You cannot say, well, I don't know. If you don't know, you need to learn, right? Tomorrow you're going to enter schools, global schools, each is going to have a smart classroom, right? You just go to the board and you just switch your internet and you can have the PPT there, yeah? You can use any color. You just pick the dot and you draw the diagram. It's going to make learning totally digital in nature. So that means you have to learn how to use the smart board or being in a smart classroom, using the learning management system, uploading assignments. Students are going to upload assignments on the learning management system, right? And you're going to look at and evaluate the systems there, right? And it is very environmental friendly. If you're looking at G20, one earth, one family, it's also very important that, we stop, just saying that don't cut trees. What are you doing to contribute to conservation of the environment or this sustainability? Please use paper less. Switch to the digital mode. Therefore, if you remember in your practical for ICT, we have the e-portfolio, electronic portfolio. The student doesn't have to give those dozens of pages to you, right? So it's very important that all of you, right? Of course, you are in a place that I'm very sure this college is going to, give you a very good training with reference to this information, media, and technology skills, no doubt about it, right? So I wish you all the best for this. It's very important. But remember one thing, never ever think, I repeat, never ever think technology can replace an effective teacher. But please remember, technology will replace an ineffective teacher. Well, if you're not giving me enough in the classroom, I'll better do a MOOC, no? Massive open online courseware which is available.
So you need to be an effective teacher if you want to survive in this digital age. A teacher is not a PowerPoint. If you're using a PowerPoint, you're not supposed to be reading from the PowerPoint. You're supposed to be explaining the discourse. This is for their reference what you're using. Please remember this. Using technology just doesn't mean just using a PowerPoint. Please remember this. If it's about PowerPoint, they can read themselves, isn't it? What are you doing in that? So what is your role as a teacher in the classroom? That's important. Okay. Life and career skills, very, very, very important. And this is an area which we are lacking enormously. No careers counseling in schools, yes or no? Right? Most of you, I'm sorry to say, most of you land up wherever you land up to study. Not because you want it or desire it. I'm not saying we were different. But because you didn't know where else to do. My peer is doing that, I'll do that. Somebody told you, I'll do that. And most of you, by the time you do your graduation and somebody says, now you have to do PG in this subject, you say, well, I'm not interested in this subject. And it's a catch-22 situation for you. Yes or no? So this is a very problematic area. The developed countries, every student's aptitude testing is done. They are guided with reference to different careers available. They are guided with reference to vocational education. So, you know, the sky is the limit for them. But our child, the child struggles because of lack of career counseling. And there's a lot of emphasis with reference to the National Education Policy 2020, which now is 4-year-old. And let's hope that every school in India has a career counselor, such that students, you know, land in places where they are really interested. Remember one thing, if you're really interested in your profession, right, it doesn't become a burden on you. You enjoy it. You're passionate about it. So life is happy. So happiness is important, yeah. So that's very, very important, that life and career skills. Now, when I say life and career skills are very, very important. Life skills, empathy, putting yourself in the other person's shoes. Sirf putting se kuch nahi hota. Empathy is all about, there is a famous American feminist, Nell Noddings. She says if you're empathetic, that means you do something to relieve the pain of the other person, to bring a change in the other person. If you're empathetic, you're listening to the problem of a child, but as a teacher, you're doing nothing. That's not empathy. Please understand, empathy means action to bring about a change, not just feeling that, okay, if I was in that position, I would have. But what did you do about it? Right? Empathy, critical thinking, creativity, interpersonal skills, very, very important. Interpersonal skills, whether you're in the corporate, whether you're in schools, whether you're in higher education, whether you're in families, right? It's important, right? What kind of bonds do you forge with people, right? It's very, very important. Another very, very important skill when you talk of life skills, right? What is your, you know, this is something very important. I'm very sorry to say that this is something which is really we are in a state of crisis. Resilience. What is resilience? The ability to bounce back in case of a difficult situation. You don't buckle down under pressure and lose hope. Resilience is very, very important, right? You should have, and remember one thing, nothing in life is constant and nothing is forever, neither you nor me. Yes or no? We have our entries, we have our exits. We don't know when. Neither we came by our own sweet will, neither we are going to go with our own sweet will. Yes or no? So what is the hurry? Ambition is good, but don't sacrifice yourself, your peace, your happiness for it. Please remember that. And don't come under so much pressure, whatever be the case, that you lose your ability to bounce back, you go into depression. Yes or no? Please, it's very, very important. Be resilient, be lively. And remember one thing, there is nobody, no matter if even if you're the richest person in the world, there is nobody in the world who's not struggling. सच मैं नहीं, सच तुम नहीं, सच है महज संघर्ष. दूसरे का संघर्ष आपको मालूम नहीं है, अपना संघर्ष आपको ज्यादा लगता है, फर्क बस इतना है, right? So it's extremely important
that you have resilience, the ability to bounce back. Then a very, very important theme with reference to the 21st century themes, are you aware what is happening around you? Right? हमारी लोकल भाषा में कहा जाता था कुएं का मेंढक बन के नहीं रह सकते आप. Global awareness is important. You can't say, well, I don't know. If nothing is happening around me, well, there are more than 300 people who have died in Wayanad. What is happening in Uttarakhand? You need to be aware what is happening around you, whether climatically, whether socially, whether economically, whether geographically, so on and so forth. Global awareness is important for sustainability, right? Then, of course, health literacy. Mental health is something which is like a time bomb ticking. We will have the highest number of psychiatric cases, and we will need the maximum number of psychiatrists by 2030. This is the case because there are severe mental health issues. Why? Because we have not made our students well skilled in life skills, right? And I think we are to blame because, why? Because all we do is, when the siblings are there, we compare them. Yes or no? When the students are there, we compare them, which is very unfortunate, right? And all we do is compete. And we compete and we perish. Even a person like Bill Gates, in the last part of his life, he said that I really feel that how much did I live? Because all he was doing at that time was building Apple. Yes or no? So it's extremely important that you understand that there has to be a healthy balance between personal and professional, right? That's very, very important. You're all young people. It's always important that you never make your profession your life. I repeat, never make your profession your life. आपकी आजीविका आपका जीवन निर्वाह करने के लिए है, आपका जीवन नहीं है. Life is a very big canvas, a very big canvas, right? So have a balance. And if you have that balance, believe me, you will be mentally and emotionally healthy, right? It's very, very important. Then, of course, when you say why are 21st century skills important? Well, they're important because they enable you to survive in this world, right? Which is not an easy place. Whether it's problem solving, whether it's a skill of negotiation, whether it's communication, whether it's interpersonal skills, whether it's intrapersonal skills, whether it's critical thinking, all these skills enable you to adapt to the world, adapt in this world, right? Make the change which you can, otherwise have the wisdom to accept the change which is going wrong, right? Because if you're going to resist every change which is coming around you, then you also know and I also know what is going to happen to you. So adapting to change is extremely important, right? Okay. Now let's move to the other one. The other slide, which of course from connected to being hyper connected, you know, iPhone, iPad, you know that, right? And you have a Mac, a computer, so on and so forth, right? Don't worry, I'm going to handle it. Skill having? Okay. Why are 21st century skills important? The projector has gone. धन्यवाद. Okay. This also is done. You cannot even, another thing, I'm going to say something and it's very, very important that go home, Google it and try to find an answer to it. Financial, economic, business and entrepreneurial literacy. Very, very, very important.
I wish I had known long back that what are the different financial options before me. How best can I save? And something which, not much taxation is also there. This is something important. Go home today and learn about mutual funds. Okay? Go home today and learn about mutual funds. There are different apps. Look at those apps. And also calculate that if you put a certain amount in mutual fund every month, how much will it become in the next 30 years? You will get the answer what I'm trying to tell you, right? Many of you, I'm very sure, also aim that, well, once I've done my B.Ed and I have the formal degree with reference to emerge as a teacher, right? I can also open my own setup. Whether I open my own, tutoring system, whether I open, I have an app through which I deliver online education, yes or no, or whether I become an instructional designer, right, or a curriculum instructional designer, and these are very lucrative professions. You can be hired by Udemy, you can be hired by Coursera, so on and so forth. There are so many, where you're developing courses for them, right? So keep that also open for you. Entrepreneurship, of course, right? But financial literacy is also extremely important. Having money and taking care of how I best use my money is important, right? And you also have a lot of resources which make you financially and digital literacy, and everything is on your mobile. The apps, you don't have to go anywhere. You just have to link your bank account with your apps, and it's all done. You don't have to go anywhere, believe me, right? So learn that. So today's homework is that you'll go home and look at what is a mutual fund and how it can help you, right? Each one of you. Okay. So what is civic literacy? This is something which we are lacking. It's such a beautiful land, ours. It has mountains, it has rivers, it has sea, it has plateaus, what not. But do we maintain it? The problem lies there. Look at the Mount Everest, all littered from the base camp upwards. I mean, how problematic can it be? If it is in my hands, I would not allow anybody to climb those beautiful mountains. Why? Because either we need that civic sense not to litter them, or we don't climb them. Or I would impose hefty fines, right? Because we're conditioned to learn by punishment instead of, the advice which is given to us, sadly. Right? So civic sense is also important. आप अपने घर में कूड़ा नहीं फेंकते, लेकिन घर से बाहर निकलते ही कुछ भी कहीं भी फेंक देंगे, क्यों? That sense of belonging, that this is my community, it is my neighborhood, it is my institution, it is my beautiful land. It's very, very important. So civic sense is something which we need to cultivate. And that, it's being said by Mudaliar Commission long back, 52, 53, cultivate democratic citizenship. You're aware of your fundamental rights, but please be aware of your fundamental duties also. Very, very, very important, right? As a citizen of this country. Okay. Leadership and responsibility, very, very important. And this is also an area, I think, which we lack. I'll tell you why. What do? One student who has in schools, one student who has leadership ability, the same student will become the monitor, will become the prefect day after day, day after day. Why? Leadership, if leadership is a skill, it needs to be cultivated. If it needs to be cultivated, you need to give a chance. You need to handhold such that they learn leadership. Because leadership involves taking responsibility. Leadership involves being accountable for your actions. So it's very, very important that you catch them young and cultivate those leadership skills. You'll have many students, when you start giving them responsibility, they immediately say, ma'am, I'll help her. You give this responsibility to her, I'll help her. Why? Because you're scared of taking that responsibility on your shoulders. Why? Because nobody actually gave you responsibility or trusted you with responsibility, so you don't have that confidence for that responsibility, which is problematic. Sooner or later, and please believe me, the most important leader in a classroom, I repeat, the most important leader in a classroom is the teacher. Why? The teacher leads the students.
So it's for the teacher to cultivate that leadership by giving chance to every student. Democratic pedagogy is not just something which is said rhetorically. Democratic pedagogy means giving equal opportunity to every child who's there in the class. It's very important. हर बच्चा आपका है, हर बच्चा important. Very, very important. आपको समदर्शी होके चलना है. You have to look at every child from the same eye. A very important quality in a teacher. Yes? Okay. Moving further. Oh, this we have done. Okay. Now, in the last 10 minutes, I'll deliberate upon very, very important things when we talk of the 21st century skill. Okay, I can move, right? Yeah. When you talk of the 21st century skills, please understand one skill which is going to enable you to wade through or successfully, wade through life, right? Is adaptability. Adapting to difficult situations, adapting to the change around you. And for adapting, it's very, very important that you also know the meaning of adjustment, right? Because if you don't know how to adjust, right, to any kind of change, you will not be able to adapt. Yes or no? And another very, very important thing, decision making is also a very, very important skill when you look at it as a skill, right? Most of you who are there in the B.Ed program or my students who are there in the M.Ed program are there because you decided to pursue this program. Yes or no? Hopefully it was your decision, right? But what are the factors which guided you to make this decision? Did you weigh the pros and cons of pursuing? Did you look at the job market? Did you look at the placement scenario? Did you look at whether your skill sets match with the profession which you are trying to take? Yes or no? These are very important questions. But did it happen? Yes or no? Did it happen? No. Why? Because you have never been guided, right, with reference to how to make the choice with reference to a particular career, right? I don't blame you for that. Neither were us, right? So it's extremely important that decision making should be guided with reference to the different factors. Look at those different factors and then make a decision. It should be a carefully thought about decision, not an impulsive one, right? Not a one just because the other person is doing, you also doing. Why are you doing it? The why is very, very important. How is it going to impact? And once it starts impacting, then you say that it's a wrong decision. Why? Because you didn't look at what will be the long-term impact of this decision. So decision making is also very, very, very important, right? Skill of negotiation. There's a quote, in life you don't get what you deserve. You get what you negotiate. Skill of negotiation is important. You're soon going to go to the job market. You're going to sit on the table. They're going to interview you. They're going to say that you have done very well, well done. And then starts the negotiation with reference to salary. If you accept the first figure which comes in front of you and you undermine your own competency, then naturally the negotiation is settled, right? If they tell you, well, you don't have an experience, so we are going to settle for this, tell them that, ma'am, please take my demonstration, but you should be confident and competent. Please take my demonstration lesson and I'm going to prove that I'm an effective teacher. That kind of confidence is important, right? But that confidence only comes, I repeat, if you're competent. Remember, if you're going to be a competent person, you're going to be a confident person. It's automatic, it's directly proportional. There are no two bones about it, right? But if somewhere you are lacking confidence, that means somewhere your competence is lacking. Build it, right? And for teachers, two areas are extremely important. You cannot survive without communication, the pedagogy part of it, and you cannot survive without content. Therefore, it is called pedagogical content knowledge. I repeat, pedagogical content knowledge, PCK. You need both. Oh, well, I can speak so well, but there is no content.
Nobody's going to listen to you. If you have a lot of content, but you don't have language or expression, nobody's going to listen to you. So you need to have both as teachers to stand confidently in front of a class and explain what you're explaining such that they understand. If you're explaining and they're not understanding, well, remember one thing, the student is never wrong. When I'm talking of understanding, I'm not talking of misbehavior, right? So it's extremely important. You should know how to give different examples. And remember one thing, never ever enter a class without preparation. I repeat, never ever enter a class without preparation. If you're prepared, you're confident. If you're not prepared, you'll be scared what kind of questions may come. Questioning is also a skill, right? If you're going to say, "Aapko samajh aa raha hai?" A yes no question. What did you understand? Give me an example to support this. Then you will understand whether they're understanding or not. So when you're questioning, use interrogative forms. Right? Yes no means they will either go either way. आप किसी भी बच्चे को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देंगे और वो अगर उसको नहीं भी आता और वो तुक्के मार दे तो उसके आधे राइट हो सकते हैं. यस और नो. तो आपको ये गुंजाइश नहीं छोड़नी. राइट? So with these, I end the deliberation on 21st century skills. And if you have any questions, I'll be very happy to answer. Any questions? अब ये मत डर जाना कि questioning is a skill. I'm not going to judge you on your skill of questioning. You're still learning, right? Any question? Anybody? Please. When you're talking about skills, there may be some student in your class who is naturally a very good communicator. Possible, convent educated, so many issues. The other child may not have got the same kind of language training. Possible. What as a teacher will you do? You will have to devote more time to this student to improve the language proficiency of this child. It's very, very important. Engage the other child in some exercises, and in the meantime, concentrate on improving the language proficiency of this child. And remember one thing, you are not aiming homogeny. What you are aiming is that I have to bring this child to the optimal potential. I'm not going to compare A with B. मुझे B को A तक लाना है. A grade हो सकता है, A बच्चा नहीं हो सकता. So no comparisons. Please understand, comparisons kill people. Whether faculty comparisons, whether student comparisons. Never ever do it. It's very unhealthy as a practice. Right? Have I answered your question? Any other question? Please. It is. We need to see beyond the professional Yes. But how do we explain it to people around us? Because we are very much into competition and it's like a race that we are running. It's a rat race and we are just competing with each other. Stop running. I stopped it long back. Stop running. Nobody can make you run. You are running because somewhere, I'll tell you why are you running. You are running because somewhere you are bothered that the other person will move ahead. So what? Let them move. You move at your own pace. क्या जैसे तो क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा. ये सब हमें कंडीशन किया जाता है. हम रेस कोर्स के घोड़े नहीं है बेटा. This is about your life. Move at your own pace and be a little thick-skinned. To ignore the voices around you who are trying to make you compete. Most of the sibling rivalries are created by parents by comparing children. And हमारे यहाँ तो अपने चिल्ड्रन क्या नेबरहुड के चिल्ड्रन से भी आपके रिजल्ट कंपेयर होता है. Yes or no? Right? So you can't change your social context, but you can change yourself. I will not be affected. Remember one thing, people who mind
don't matter. People who matter don't mind. Yeah. Remember this. And remember this also. Change is the only constant. Nothing is forever. Everything is transient in life. And you are very, very important. You are a very beautiful, empowered individual. Right? Give gratitude for this life. Before you sleep, tell yourself, I'm a beautiful, empowered individual. You'll feel better. Right? And before you sleep, forget all your problems. I do that. And next one, I'm going to tackle you in the morning. Okay, bye. Yeah, it really helps. Yeah. So with this, any other question? Have I answered your question? Okay. Any other question? Please. Good afternoon. Very good afternoon. As you said, we should maintain a balance between professional and personal life. Yes. But we tend to forget and move forward in life. True. And during the school, as a teacher, also, we will have the pressure to in the class. So how can you give us some tips or suggestions from your experience and guide us better to how we should maintain a balance between both? Maintaining a balance is a very fine art. I maintain a balance, for example, in my work timings, right? I give it my best, right? Unless it's an emergency, I don't take calls. Otherwise, I'm totally dedicated to my workplace. But when I'm at home, I don't take professional calls. I don't. Even if it means putting my phone in airplane mode. That's a good idea, isn't it? And I have an alternate number for my family. Survival mode. Yes or no? That's very, very important. My family time is my family time. My professional time is my professional time. If it's a professional emergency, I'm going to rise to the bait in my family time. If it's a personal emergency, I'm going to rise to the bait in my professional time. That's a separate issue. But maintaining a balance is important. And you'll have to be a very strong person, beta, for that. Mentally tough. Don't bother who's judging you for that. Don't bother. Because again, the same story. People who mind don't matter. People who matter don't mind. And remember, people will judge you for a very short time. What is more important is you judge yourself well. Your happiness is very, very important. And you have a right to be happy. I repeat, everyone has a right to be happy and healthy. That's it. And gradually you learn how to maintain that fine balance. Learning to say no is a very important skill. Learn it. If you're going to say yes to everything which is put across you, well, it's again, the reward of good work is more work. I'm not saying don't work well, but you should know how much to take. कितना आप कर सकते हो, आपकी क्षमता क्या है, right? So that will help you maintain that balance. Yeah? Thank you so much. Welcome. Yes. Very good afternoon. Ma'am, my question is, as a girl, we are constantly being judged. We face a lot of things in a daily basis. Yeah. So, What you wear, how you walk, how you talk, how much makeup you wear. Yeah. so how do we, when you are in a professional, like a corporate world or anything you are standing, that we constantly judge. True. So how to cope up with that thing, and that gives you anxiety, that gives you a stress about that thinking. Yes, I'm at that place. Still, I need to be maintaining my professional life, my household. So I will judge at my home. With God for being as a girl, I need to go. For as a professional life, I need to do this thing. But you are a girl, you can't do that. But how to ignore those voices. I'm a very passionate feminist, right? Ignore those voices who judge you just because you're a girl, right? They will take time to change. It doesn't happen overnight, and a lot of it comes with reference to how you've been brought up. So you can't blame them also, right? If you're brought up in a liberal way and you've never been discriminated against, it comes with you, right? But you are responsible for yourself. You are an individual first. All other things, whether your sex, whether your gender, come later. Yes or no? You will have to learn to ignore any kind of judgment.
आप सूट पहन के आएंगे तो आपको जज किया जाएगा, आपने साड़ी क्यों नहीं पहनी। आप साड़ी पहनेंगे तो कहेंगे अरे ये वाली साड़ी क्यों नहीं पहनी। हर चीज में जजमेंट होगा। अब आप सारी दुनिया को नहीं बदल सकते, आप इग्नोर करना तो सीख सकते हो। इट्स योर चॉइसेस, यू शुड रिस्पेक्ट योर चॉइसेस। रेस्ट, don't bother about judgments. The human mind is naturally, it's a natural ability to judge everything, right? अब जजमेंट का तो है, किसी को इस कमरे में ठंड लग रही होगी, किसी को थोड़ी गर्मी लग रही होगी, हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन मेरा मेटाबॉलिक रेट क्या है। But if everybody starts thinking about the judgment, I don't think an AC temperature can be set. So they set the AC temperature and we all, depending upon where we want to sit, can sit, right? So, yeah. How to maintain a professional in a personal boundaries when you are in a professional bond? So how to maintain that your colleagues? Suppose somebody asks you a personal question at a professional place and you don't want to answer that question. You can very politely say, well, I would not like to answer the question. That's personal. In the West, people ask you, may I ask you a personal question? And if you say no, people will not be offended. We have not reached that stage. If we say no, people are not only offended, people are zapped, people are like about to get faint, right? But it's very important that you say it very politely. Let's not mix personal and professional. Thank you. Just say this. Let's not mix personal and professional. And when you go home, switch off the professional mode. All it requires is training of the brain. Nothing else. And remember one thing, work hard, but play harder. You live only once. Enjoy life, each moment. Yes or no? Yes, ma'am. You're lucky that you're human beings. But by enjoying life, I just don't mean being glued to Netflix. Okay? Welcome. That's it. I think I enjoyed the discussion more, especially the questions. Yeah. Thank you very much. It was a pleasure. Because if no question comes, you feel either you're extraordinary or it went overboard. Yeah. So I think you saved me from the judgments. Okay. Thank you very much. God bless you. Thank you, Jyoti, for this invitation. And thank you, all of you, for being patient listeners. Thank you so much. Thank you so much, Shalini ma'am, for such an enlightening session. At its very outset, as you upheld the significance of developing and incorporating the 4 C's, including creativity, collaboration, communication, and critical thinking, your detailed explanation of the same helped all of us to realize its relevance. The indispensable need of developing an interdisciplinary approach, as mentioned by you, ma'am, has inspired us to work towards its inclusion in both our learning as well as teaching strategy. As you further enlisted the importance of technological, life, and career skills, we acknowledge that they are essential to ensure our survival in this world. As you proceeded with explaining us the need of developing financial, economic, business, and entrepreneurial literacy, we are definitely going home and accumulating knowledge about the best available investment options. Further, we commit to cultivate the required civic skills to contribute to the progress of our nation to the best of our capacities. And as you, ma'am, took the center stage in your distinct style, you motivated us in ways more than one can imagine to ensure an overall development of our personalities to come across as deserving candidates, effective teacher, a well-equipped teacher educator, and above all, a beautiful, empowered individual. Thank you so much, ma'am. And with this, we would be now starting with technical session 2. The G20 summit, while primarily focused on global economic and political issues, also holds significant implications for college education. And therefore, I would like to invite our esteemed resource person for the scheduled technical session 2 onto the stage, Dr. Anjali Shokeen ma'am.
to further enlighten us on the ongoing theme. Professor Anjali Shokeen ma'am is a renowned academician, currently designated as Associate Professor, Department of Education, Central Institute of Education, University of Delhi. Ma'am has a PhD in education from Jamia Millia Islamia University. Ma'am's research interests and areas of specialization lies in teacher education, educational management and administration, research methodology, commerce education, educational guidance and counseling. Ma'am has gathered vast experience over time as she has worked in the capacities of Associate Director in Directorate of International Affairs GGSIPU, Assistant Director in Directorate of Students Welfare Member NEP 2020 Implementation from 2021 in GGSIP University, Member and Convener of Course Development Committee, B.Ed, M.Ed, PhD and Integrated Teacher Education Program and much more. Ma'am has been honored with Best Paper Award by BVRIT Hyderabad College for Women in 2023, Selfless Service to Community and COVID Warrior by GGSIP University. Ma'am has received International Educational Award for contributing to student development by Kites Education in 2020. Anjali ma'am has also worked on 5 research projects and has more than 50 papers published in journals of national and international repute. Anjali ma'am has a number of scholars pursuing PhD under her supervision. And ma'am has authored and co-authored more than 12 books on varying topics. Thank you for such a warm welcome. And I think you have elaborated so much, which is not required. Stopping in between, there was so much more to say. Ma'am, can you do this? We are going like that. How? Amit, attach it to your- If you want- can assist. If you can stick your movement, then it's fine. Otherwise, if you want to, then we'll try that. Will you move it to your presentation? Yes. So then just put it on this corner of the plant. That's it. That. No, I will hold that. So I have to hold this in my hands. You can attach it if you want, otherwise you can. Okay, thank you. It's where it was. Okay. Yeah. Yeah. So, very good morning to all of you. So, I think some students they have taken the break. I think. Huh? So, in the meantime, I just want to brief. Like my presentation is on the theme which the FCP has, that is the G20, one earth, one family, one future. And I have chosen the topic on internationalization of education and global citizenship, as you can see also. But why I'm speaking again, because in the meantime, students they can come and join us. And how my presentation will begin, it begins with the theme, that is the G20, that what is all about G20, and what is all about that one earth, one family and one future. That is, I think you must have known about the phrase Vasudev Kutumbakam. And we have, last year only we have, India has the presidency of G20. And so many deliberations and discussions were made to you can say, to improve the education.
In the theme also it is mentioned that this theme was for the quality education. So when we say quality education, a lot of things has to be kept in our mind, that how we can make our education system as a quality education, how it can impart the quality education in schools, how it can impart the quality education in the higher education. So we have been talking about the education for, I think, in memorial time, but and so many policies also came. When I was sitting here, I was seeing that the national education policy front page is there. I think you must have studied. This is a 64 pages document. Then the school section also, earlier it was 10 plus 2, and now it's 5 plus 3 plus 4. There is no more senior secondary. It's all about secondary. And in the third page, which is displayed here, it is talking about the policies. The 68 policy, then the 86 policy, the program of action 1992, and then finally after 34 years, National Education Policy 2020. Recently, we have completed 4 years. The policy came in 2020, and the first draft was opened in 2019. Vinay, I missed the tip touch. Okay, thank you. So, yes, sit down, please. Now I think also. Okay. So, the first initial document came in 2019, which was a draft guideline, and then later on it was finalized and came in 2020 under the chairmanship of Kasturi Rangan ji. I think you all know that. Okay, so now I think I have given you some background about this. Now my presentation will focus on that what is G20, what is the motto of G20, then how we can ensure the quality education, and then it is followed by the internationalization of education. What is it, and what are the recommendations of the policy on the theme internationalization of education, and then it will be followed by the global citizenship, how these are related and why it is important and why we are talking about the global citizenship these days. And we are thinking about, not thinking about, I think some universities, they have taken action on that, they have made global citizenship education as a paper, as a course in the curriculum. But now more and more universities all over the world, they are thinking about that why this global citizenship is required, and why it is why there is a requirement to make it as a compulsory paper. Okay, so this is okay. So I will begin by my presentation with this quote, that is, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. It's a very famous phrase which we all know. I think we all know. In the school education also, in the school stage also, we have heard about this. हम बोलते हैं ना, किसी भी कंट्री के किसी भी सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम को आप स्पॉइल कर दीजिए, you will spoil that country. Why? And what Britishers have done when they have ruled our country? There were no permissions granted to each and every child to get admission in the schools. Why? Because they don't want that we, as Indians, we study and we have grown our minds. No. This was the bar at that time.
sooner and sooner later, then people realized that we should have the education to know what is happening today, what is happening globally. We should be aware of all the things. When I was listening with the previous presentation, Dr. Shalini also mentioned that whenever we are students, whenever we are working women, whenever we are housewives, we can't say we don't know. हमें नहीं पता क्या हो रहा है. राजेंद्र नगर में क्या हुआ है, you all know. How many kids are killed during that? You know that. Media is hiding the things also, and then the same media is showing again. I think one day before, when again it rained, that the same situation is like that. And now, I think you have heard that coaching centers are being shifted to some another place, Rohini or some other place. What is happening in Iran? कभी भी युद्ध हो सकता है. सुना ना आपने कल what has happened? They killed their topmost person. So, as a student, as a teacher, as a housewife, we all should know that what is happening in our own country, in the other countries also, because we are the citizens of the country. And if we are not aware, then what we can do? हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे. And as a teacher, the responsibility becomes twice. Because when we are teachers at school stage or at a college or university, or I can say higher education, our responsibility is, no doubt, it is twice more greater than a general public, because we are dealing with the students who are the nation of our country, who will build the nation. We always say that teacher educator, we all belongs to teacher education fraternity. So we all are teachers, we are preparing the teacher educators who will be the face of tomorrow, because they have to go in the classrooms and they have to tell what is happening and how you have to deal with them. So many things Dr. Shalini was telling, very practical things. Then when we go to the class, we have to face the individual differences. All students are not same. We have to handle, we have to answer, we have to solve their queries in a different way, because their needs are separate. Their upbringing is different. So we have to think about that, what kind of atmosphere they are having in their homes and how we can cater them with their different needs. Okay, let's come to the point. So education is the only thing by which we can bring the change. And this was given by the Nelson Mandela, you all know that. This slide is telling so many things. The first one, which I want to tell you, I don't know how many of you have realized or not. Just see the logo of G20. You can see the colors saffron, white, green, and white also, which are the colors of our flag. So those colors are used, and one is blue. Blue which is depicting the world. So this was very, you can say, intentionally made logo and intentionally mentioned Vasudhaiv Kutumbakam, that the whole country is one family, and we need to understand that. You can see the next picture, which is showing that Vasudhaiv Kutumbakam, the world is one family. And how many of you know about that? This is the Sanskrit text, which is the part of Maha Upanishad, and that means the world is one family. So this logo, this phase that is intentionally chosen from this Upanishad, which is
4,000 years old. And once I begin with this, I want to tell you one thing, otherwise I'll forget that. When we talk about this internationalization, we are thinking about the internationalization of education, but it has a roots. It is not the first time we are thinking or we are taking the initiatives for the internationalization. We are the country, we are the nation where lot of students, they came to our country to get the education. We have the Nalanda, we have the Takshila, and we all know that what happened to those universities. Who do not want that the foreign people, foreign students, they come to our country. And for doing that, the whole libraries were fired. And it took so many days, in fact months, to get it lost. So we were very rich in our education system. And now the government's focus is that again we have to think about that kind of education system so that the foreign students also come in large numbers to our country. That is the main theme for the internationalization of education. Then very quickly I'll tell you the vision. When we say one earth, what we want to say. It's a global unity. Earth, when we are talking about earth, we are not talking about India. Because when we say earth, earth pe to sabhi countries hai na. So global unity and environmental sustainability. Again, I want to focus on when we say sustainability, environment sustainability. Look, these are two courses in our teacher education also. I don't know how many of you remember. I think before 10 years back, there was like a suggestion. First, it came as a suggestion, then it came mandatory that environmental education should be the part of the curriculum. Environmental education school में था, colleges में, higher education में नहीं था. And the Delhi University is the first university who made this paper as a compulsory course in their curriculum. And then later all the universities of this country, they have made this environmental education paper as a compulsory paper because that was a mandate from the government. Environment education. Now, these days we are talking about sustainable education also. I think you are having one optional paper of sustainable education also. You have to choose. Why? हम सस्टेनेबिलिटी को भी पढ़ना चाहते हैं और अभी तो ऐसा टाइम आ रहा है कि हम ग्लोबल सिटीजनशिप को भी पढ़ेंगे. So where are our values? Where are our morals? कहाँ गए सब चीजें जो हमें आज ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन भी लेनी पड़ रही है? Because कहीं ना कहीं हमारा वैल्यू सिस्टम जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है. सॉलिडेरिटी की जो बात हम करते आए हैं, फॉर विच आवर कंट्री हैज द नेम, वो सॉलिडेरिटी कहीं खो गई. And that's why we are thinking that global citizenship should be the part of the curriculum. And this is the time where we as a teachers, we want to sensitize our students that they should be prepared for the global citizenship. Yes. So one family, when we say, the whole family is one family. But these days we consider our family is our parents and the siblings. That's it. In fact, जो cousin brothers, cousin sisters, और जो दादा दादी, नाना नानी, चाचा, ताऊ और बुआ, वो सब रिश्ते तो कहीं पीछे छूटते ही जा रहे हैं.
हम इतने मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में इतने सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं कि हमने सब कुछ पीछे छोड़ दिया है। तो यहाँ तो हम ग्लोबल लेवल पर हम बात कर रहे हैं सिटीजनशिप की। एंड इंक्लूसिविटी मतलब सबको साथ लेकर के चलना। हम यहाँ क्योंकि इंटरनेशनलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो मैं फैमिली से ऊपर जो है बात करूंगी। आई विल टॉक अबाउट द कंट्रीज कि ऑल कंट्रीज आर इक्वल। देन वन फ्यूचर, दैट इज द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ द ग्लोबल फ्यूचर्स। एंड इसके साथ आपने देखा होगा बुलेट में आई हैव रिटन रोल ऑफ एजुकेशन इन ऑल दीज थ्री, because I started with my first slide that education is only the means. So here again I have highlighted that the education's role in promoting environmental awareness and action, education in fostering mutual respect, then education's role in addressing the future challenges. Climate change, these days we are facing a lot. Technological advancement, of course, the same thing I will repeat, that a technology can't replace teachers, but technology is assisting teachers. And now in this world, we all know that robots are also coming in the classrooms and they are teaching. Earlier it was like they are assisting teachers. Now they are actually teaching. You know, the first robot teacher in Kerala. And earlier, the robots are assisting, and that happened first time in Bangalore, I think 5 years before. So day by day, the technology is coming in the classrooms also, and very sooner that technology will come in our homes also, where it can be used for so many things. We can't imagine that. And the economic disparities. Economic disparities begins with home and it has no boundaries. We all have seen latest the marriage of Ambani's. How much money is spent. We don't talk about that, whether it is worthwhile or not. That is a separate debate. So now the next one is G20. You all know that G20 is group of 20, where the 20 countries are there, inclusive of African Union and European Union. Because why we say European Union? Because so many countries are again the part of the European Union. Then I think you can easily see from the slide also that this G20, what is the objective, or you can say what is the rationale behind that, that it strengthens the shaping and strengthening global architecture. When we say global architecture, it means the solidarity which we have already discussed about, multilateral cooperation, multilateral relations also between the countries, safeguarding the planet. Here the planet is again we are talking about Earth, because all the countries they are on the Earth. Then major issues related to global economy, for example, the international financial stability, economic disparities, public health, and sustainable development. I think all these 4 components we have already discussed. So the main focus of G20 is on these factors, that how these things can be strengthened. Now see, this is important to know when we say quality education. Generally, whenever we say, what do you expect from the schools or the colleges or the universities, that they are making, they are providing the quality education? How? I'm asking this question to all of you. When I say quality education, what exactly it means? If I say education and if I say quality education, what is difference between education and a quality education? It's very simple question I'm asking you.
Incorporation of practical knowledge. Practical knowledge, okay. Incorporation of latest trends. Latest trends, okay. More relevant to real life situations. Which is practical based again, real life situations, okay. And yes, very, very good. Inclusive and equitable. Relevant education, yes, very good. How many of you have seen this brochure? The brochure of this faculty development program. Have you seen? I asked Jyoti ma'am to please get me this brochure. I have the intention. Quality education, when we say, and if you can see the different themes, they all are the part of quality education. And I congratulate you, Dr. Jyoti, for making this wonderful theme of FDP and choosing these relevant sub-themes. You all have this. I don't know कितनों ने पढ़ा है, but इसको एक बार दोबारा से देखिएगा. The all themes are the components of the quality education. And I want, because we are talking about internationalization, I want to give you the brief introduction about some countries, what they are doing. Have you heard about the Kenya's solar power internet schools? In our country, this is the main problem, that internet facility is not there. We always say कि online education की drawbacks जब हम discuss करते हैं तो हम हमेशा बोलते हैं कि reach नहीं है. So for that we have the example of Kenya. What they have done, they have solar plants everywhere. And by solar connections, nobody in the country can say that we can't access online education. That is the best example to give the quality education, I can say. Use of solar power internet schools to provide education in the remote areas. So their problem is solved in that way. Next, Finland. Of course, I also usually say, we always say Finland, Finland, Finland. But one thing is there, Finland is very, we can't compare our education system with the Finland education system because of the size. Finland, its country has a size kya hai? They can afford. The students ratio is 20:1. Even 21 students are not allowed in a class. Only 20 students. And what is the situation in our country? Minimum 40, 50, 60. And in rare cases, so you know very well. But one thing I liked, Finland, is their assessment. And for that, they are, I think, more famous. They have not routine type of assessment. One test for all students. One test at same time. They have assessment, but according to the students, according to the content which they are imparting in the classrooms. Practical, theory में फिर और अलग से बहुत सारे courses. So उनका कोई भी एक uniform assessment system नहीं है. This is the best thing. Then Germany. Germany's dual education system. Now we can't say in India also we have the dual education system. UGC 2022 guidelines clearly says that we can do more than one degree at same time. So I think we have borrowed this one good thing from the other countries, and we have to.
कुछ अच्छा किसी के पास है तो हमें उसको लेना चाहिए। तो Germany's dual education system that combines vocational training with academic. So now two things. One part is dual education system. The second one is that we Indians, we are having a mindset that vocational subjects are chosen when we are not able to perform in academic subjects. हम बहुत इक्वल उसको पैरिटी पे हम नहीं देखते हैं। और जबकि आप फॉरेन कंट्रीज में जाएंगे, you will find electrician, you will find plumber, they are getting more salary than the white collared people, and that's why a lot of our students, they are going to foreign countries because they are earning too much for doing all these things which they are not paid in our own country. This is the one thing which is attracting our students more, and that's why we have to think about the internationalization, that how we can stop our students to our own country. What else provisions, what different provisions we have to make in our own country so that our students will stay here only. Brazil में क्या है? One, you can say financial aid, which is provided to the students for getting the education. I'm not saying that in our country the financial grants are not given. They are given, but not up to the mark. Because I think we have no that much resources. The policy is talking about the 6% of GDP should be spent on education, but still recently we had the budget और अभी तक हमने उसको achieve नहीं किया है. So I think it will take some more time. And that grants which the Brazil government is giving to the students, they have reduced the poverty level also, because they make sure if the grant is given to the student, then the student must avail education. It's not like in our country, like there are so many schemes, Ladli scheme, there are, and you all know that what happened to that scheme. Poor people, those who can't afford education, they get their child admitted in the schools, and then later on they stop sending. Just that money is the attraction. But in Brazil government make it sure that whosoever is granted should complete the education. Then Singapore's STEM education, you all know that Singapore is a very small country, and now see such a good universities they are there. Now see, so I think this, I have given you the background of the topic which I have chosen. Now see, when we talk about the internationalization, before discussing that what are the initiatives which the government has taken, we should know that what are the recommendations which the national education policy has given on internationalization of education. The first one is need to attain the goal of global quality standards so that it can attract the foreign students. As we have discussed, that the kind of universities we need to make like Takshila and Nalanda so that we can attract the foreign students to our country. Make India as a top study destination. How we can make a top, or you can say global study destination, so that the foreign students, they come to our country. अभी क्या हो रहा है? African students का strength सबसे ज़्यादा है. कितने स्टूडेंट्स हैं जो अफ्रीकन कंट्रीज से बाहर के आते हैं? वेरी फ्यू, और आई कैन से बिल्कुल ना के बराबर. दैट इज द थिंग, दैट इज द सिनेरियो.
Facilitating faculty-student exchanges. How many universities they are having the faculty-student exchanges? I have worked in Guru Gobind Singh Indraprasth University for more than 10 years. And now I am working in Delhi University. And luckily I have the chance to work in international affairs of Guru Gobind Singh Indraprasth University. I think almost 2 years I was the associate director. Let me tell you, I should not hide the facts. But before 5 years, there were no exchange programs. Instead of having that the Directorate of International Affairs, which many universities are not having. But now, when this has come as a recommendation of National Education Policies, so many universities, they have opened the Directorate of International Affairs department. Earlier, very few universities are having this department. And you can imagine the situation when I'm saying कि department ही नहीं है, तो कहाँ हम इंटरनेशनलाइजेशन की बात करेंगे और कहाँ हम फैकल्टी और स्टूडेंट के एक्सचेंज की बात करेंगे. But what I was telling you that in Guru Gobind Singh Indraprasth University, now the faculty exchange programs has started. It is started, but not so many. Only 3 or 4 faculty members, they are involved in that process. One Poland University, their professors, they have visited our university and they taught our students for 10 days, and then our faculty also goes there and they taught there. But students, still we are waiting. But one PhD scholar has gone, but not the PG students or UG की तो अभी हम बात नहीं करेंगे. But this has started. But in Delhi University, lot of exchange programs are happening. Their faculty is also mobile in this, and the students also. You know that Delhi University is a world-class university, because in foreign universities also they know that the Delhi University, because that was, I think, the very oldest university. And the institute where I am working, that the Central Institute of Education, that was the first teacher education department which was opened in our country in 1947. And that's why whenever a faculty or a student writes the name and write Department of Education, they always write in bracket CIE, because that is a central institute. So that is the history, and I was telling you that the exchange programs in Delhi University, they are very often. Encouraging top performing Indian universities to establish campus abroad. Have you heard about that? Which educational institution is given the chance to set up their campus in the foreign university? Huh? IIT, very good. And one IIM. They are allowed to open their campus in the foreign university. That is the first initiative which is done already. Top 100 universities in the world will be allowed to operate in India. And each educational institute will set up an international student office to welcome and assist students arriving abroad. This is the line which I have taken from the National Education Policy, because this is a recommendation. And I have already told you that this international student office, जिसको generally हम बोलते हैं Directorate of International Affairs. Now this department is being opened in many universities. And each higher education institution will allow to count credits earned at foreign universities when necessary. Because when we are saying that dual program, dual degree is allowed. So, if you are doing BH from this institute,
simultaneously you can enroll in any degree program of foreign university. You know now, because this is now acceptable. Earlier it used to happen that when we do 2 degrees at same time, 1 degree we used to hide because that will not be counted. But now you can easily do one in distance mode and one in regular mode. वो तो बहुत easy है. वो चाहे आप इंडिया से करो या किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से करो. Anybody who was asking? Okay. अच्छा वही पर ही रहेंगे. Okay. So either you can do from an Indian university or you can do from the foreign university. And now you can do 2 regular degrees also. The UGC guidelines of 2022 clearly states that you can do 2 degrees simultaneously, but there is one condition, that timetable should not be clash. Then the question comes, then how, ma'am? Morning, evening. One can be done in morning shift and the another program in the evening shift. And you have to make, you have to do a lot of homework to see that where this can happen. So these all are the recommendations which the National Education Policy has given on internationalization of education. Now, those were the recommendations. Now initiatives. What is being done? अभी क्या हो गया है? क्या हो रहा है? First thing is, I don't think आपने किसी ने भी जो ये guidelines हैं UGC की 21 वाली अभी पढ़ी हैं. You can take pick of that because you must study. You will be becoming teachers now. आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन जो है उसकी गाइडलाइंस बन चुकी हैं जो 2021 में रिलीज भी हो गई हैं एंड दैट इज नॉट अ ह्यूज डॉक्यूमेंट. आई थिंक इट इज लेस देन 30 पेजेस. Approximately only 30 pages are there for these guidelines. Then 179 universities have established office for international affairs. अब आप देखिए हाउ मेनी यूनिवर्सिटीज आर देयर इन आवर कंट्री. कितनी यूनिवर्सिटीज है, कितनी यूनिवर्सिटीज को और ये डिपार्टमेंट ओपन करने की जरूरत है. टिल नाउ 179 यूनिवर्सिटीज. This is the data which I am sharing with you. This is the data of January 2024. This year January से अब अगस्त स्टार्ट हो गया है तो 6 months का डेटा आई डोंट हैव. ये डेटा जनवरी तक का है. And 158 universities have set up the Alumni Connect cells because Alumni Connect cells भी नहीं थे पहले. Now the universities are more sensitized towards the alumni also. 5 साल पहले हम alumni के नाम पे क्या करते थे? Nothing. Because that was not required, that was nowhere any recommendation. That's why we all are not working for that. But now for everything, we require alumni data. Then this I have already told that in order to foster the academic collaboration between Indian higher education institutions and foreign higher education institutions, UGC has offered the twinning, the joint degree, dual degree regulations 2022. This also you please study because this is officially become the guidelines in only 2022. That's why no initiatives were taken for opening the campus of our premier institutions to the foreign countries and their campuses in our own country. In my, I think, next 2-3 slides I have mentioned also, but for checking your knowledge, I am asking you,
Just like you said that IIT and IIM, they are allowed. Now, not all, it's only 2. Have you any idea that which university is allowed to have their campus in our country? Huh? Are nahi, no. And let me also share, when I faced the interview in Delhi University, because in the month of, I'm very open because I think so many of you are aware that it's only 5 months before I joined Delhi University. And I have given interviews for both universities. But in Delhi University, it happened very fastly. In our university, our university, because I have spent more than 10 years there. Here it was little late, and I'm waiting for the results also. So that is a thing which I want to share. And what I was telling you, that whenever we apply for a job, we always give our data, full-fledged data we always give. And when we face the interview, that data is in their hands. वो data उनके हाथ में होता है, whatever we fill. तो ऐसे ही मैंने भी कहीं लिखा हुआ था that I have worked for 2 years in international affairs and I have worked 4 years in student welfare. So the expert asked me, Madam, can we ask you one thing, as you have mentioned that you are associate director in international affairs, which universities are coming to our own country? And luckily I know that, because the 2 Australian universities, they are coming. And where they are coming? In Gujarat. So these 2 answers I have told. Then the third question, because they are experts, they asked, Australian university is okay, but which university? So I told Deccan University. Okay, ma'am. And which is the second one? I forgot. I don't remember. And in Gujarat is so big. Gujarat में कहाँ आ रही है? मैंने कहा sorry sir, I don't know. That is a gift city. In next 2-3 slides, it is mentioned. So why I have shared my experience to you, because you all also will become teachers and you all will apply for a job, and whatever you mention in your resume, just try to learn each and everything. Like one more example I want to give you. I did my MCom from MDU, Maharishi Dayanand University, Rohtak, because Rohtak is my native place. I born and brought up in Rohtak and got married in Delhi. But my degree is showing MDU. So they asked me, okay, madam, MDU, आपने वहां से क्यों किया? मैंने कहा सर, that was native place. तो ये जो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी है, who was महर्षि दयानंद, and what is the history behind that? Luckily, that also I know because I belong to a Arya Samaj family. So I know the background also. Likewise, when you will mention that you are graduated, you did your BA from Guru Nanak Institute of Education. Who was Guru Nanak? What is the history of this college? When it was opened? Who contributed a lot in making this college? These are the things which you all know very well. और उसके साथ जब आप लिखेंगे गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, उसको मत भूलना. वो भी आपसे पूछ सकते हैं कि आप अच्छा आपने गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से किया है, तो गुरु गोविंद सिंह नाम क्यों है यूनिवर्सिटी का? इसको मार्क माय वर्ड्स, आई थिंक आपको 5 साल के बाद शायद रियलाइज होगा, कभी भी अरे मैडम ने कुछ बताया था.
रिज्यूम में जो भी आप लिखते हो उसका बैकग्राउंड आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। एंड लकीली उस दिन मैं इंटरव्यू से आके मैं फिंगर क्रॉस कर रही थी, शुक्र है मुझसे जामिया मिलिया इस्लामिया नहीं सीरियसली, क्योंकि मुझे जामिया मिलिया इस्लामिया का बैकग्राउंड बिल्कुल नहीं पता था। एंड आई डिड माय पीएचडी फ्रॉम देयर, माय हाईएस्ट डिग्री जामिया से है, ज्योति मैडम की भी है वहीं से। ऐसा नहीं है कि मुझे जानना नहीं था, बट कभी दिमाग में आया नहीं। और मैंने बाहर आके यही मैंने कहा, बिकॉज हस्बैंड होते हैं हमेशा साथ में, तो कि आप जो अनमैरिड है पेरेंट्स ब्रदर, या ये एक हो सकता है कंडीशन भी हो, आप अलोन भी जा सकते हैं, बट मैंने कहा शुक्र है जामिया मिलिया इस्लामिया नहीं पूछा, पूछ लेते तो क्या होता, ब्लाइंड हो जाते बिल्कुल। तो सब पता होना चाहिए कि गुरु गोविंद सिंह इंटरप्रेस यूनिवर्सिटी कब बनी थी, उसका क्या फाउंडेशन है, उसकी क्या हिस्ट्री है। दिल्ली गवर्नमेंट ने ओपन करी थी, तो गुरु गोविंद सिंह नाम ही क्यों रखा इस यूनिवर्सिटी का, तो सबका एक हिस्ट्री होता है। तो कुछ भी आप लिखो, कहानियां मत लिखना, रिज्यूम में सिर्फ उतना लिखना जो एक्चुअल हो और जिसको आप आंसर कर सको। यस, अच्छा, here it is written only. World-class foreign universities and institutions will be allowed in the Gujarat, that is GIFT, which I was telling you, Gujarat International Financial Tech City के अंदर ये जो 2 ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज हैं, दे आर बीइंग सेटअप। आनी नहीं है, काम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है वहां पर, लास्ट ईयर ही हो गया था। Then offshore campuses, you all know that. I have written also the campus of a private university established by it outside the country. ये एमिनेंस जो है हमारे, जैसे IITs की बात कर रहे थे, वो एमिनेंस है, प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे। Then yes, next one, please read these guidelines also. Last year UGC, these regulations are also came on 7th November 2023. Earlier these guidelines were circulated as a draft in the month of June 2023, and because I was the UGC nodal officer and I was in the international affairs, so I was given these guidelines, and my suggestions, they have asked that if you want to give any suggestions on this draft, you can give. And then not only in our university, in all the universities of this country. So UGC has circulated, like National Education Policy, you all know, na, that the open discussions were asked from each university. So likewise. So, but now, and these guidelines, they have clearly, they have talked about that how the admission process will follow and what will be the fee structure. And this is also not a huge document. The 3 documents I have told you, these documents are not huge documents कि आपको देख के लगेगा कि अरे इनको कौन पढ़े। ये बहुत छोटे-छोटे documents हैं, very small. You can easily read in a day only. Then the scheme for promotion of academic and research collaboration. You all know that the GNCE scheme, you have already, I think you must be knowing that, that the reputed international faculty, they will come to our country and take some classes, and likewise ours under this GNCE scheme. Because as the name indicates, that is a global initiative for the academic network. Then the leadership of academicians programs also. Okay, so these are the initiatives. Next, in continuation. Now see, this is a very important thing. You all have studied that the gross enrollment ratio should be 50% by 35. Up now see how this target will be achieved. इतना तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है,
हमारे पास फैसिलिटीज ही नहीं है कि हम इस टारगेट को अचीव कर सकें, तो क्या होगा फिर? According to this target, more 900 universities have to be opened. 900 universities. हम दिल्ली में, हरियाणा में, यूपी में हमें लगता है अरे बहुत कॉलेजेस हैं, बहुत हैं, एडमिशन नहीं हो रहा है, यहाँ तो सीटें खाली हैं, बट हम सिर्फ 3, 4, 5 स्टेट्स को ही देख रहे हैं। हम सभी स्टेट्स को देखेंगे तो दिस इज द डेटा, दिस इज द लेटेस्ट डेटा विच इज शेयर्ड बाय गवर्नमेंट इन जनवरी 2024। ये 6 महीने पहले का डेटा है। ऐसे में हम ये टारगेट कैसे जो है वो अचीव कर सकते हैं? बाय ऑनलाइन एजुकेशन। ऑनलाइन एजुकेशन में एनरोल करिए, उससे भी हम ये जो है अचीव कर पाएंगे। And you can easily see that for this, the foreign direct investments, FDIs, and the commercial borrowing, this will be functional, जिससे हमें ग्रांट मिलेगा। और वो कहां से मिलेगा? From the developed countries, because our country is developing. Now see, now I am discussing about the things which are going on in fact. Like the first one is G20 Education Working Group. This was formed previous year, which states, which comes under the G20 India presidency, which talks about the concrete, collaborative and action-oriented strategies and roadmaps for the future of education. इसमें हम किसकी डिस्कशन हमने लास्ट ईयर जो किया था, बिकॉज so many education minister of many countries, they came to our country and they have discussions with the ministers of our countries, the education ministers one-to-one. In the next slides I will tell you that which are the countries. And now you know very well that these days for last 2 years so many ministers, they are going abroad. इतना मूवमेंट पहले कभी नहीं था, 2 साल से पहले ओनली प्राइम मिनिस्टर यूज्ड टू गो, और ये जो एजुकेशन मिनिस्टर्स तो कभी नहीं जाते थे। ये अभी 2-3 सालों में सुनने को मिला है कि धर्मेंद्र प्रधान जी आज वहां गए हुए हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी आज वहां गए हुए हैं, बिकॉज उनको तो अभी सेकंड टर्म भी मिल गया है। द फर्स्ट एजुकेशन एक टर्म तो वो कंप्लीट कर भी चुके हैं। देन एजुकेशन मिनिस्टर्स मीटिंग, जो शॉर्ट फॉर्म में EMM है। Again, this meeting was held last year on 22nd June. I have mentioned also in Maharashtra. Or after this meeting, one document came as a report that states, उसका नाम ही यही है, G20 One Earth, One Family, One Future Through Education. It's a compendium जो ये बताता है कि कैसे आप collaborate कर सकते हैं। Then this document, this compendium highlights each country's policies and priorities, कि हर एक कंट्री का क्या होगा, उनका फ्लैगशिप प्रोग्राम क्या है, so that the countries who want to adopt, they can adopt. Next, India-US Working Group on Education and Skill Development. This meeting held last year in May 2023, and the outcomes, in outcomes, there were 4 subcommittees also for the skilling and vocational education. You know that Professor Kalsi, have you heard about Professor Kalsi? He is the chairman of the Skill Education Committee. He has formed, आपने वो पढ़ा है डॉक्यूमेंट, अभी नहीं पढ़ा होगा मे बी, the National Skill Framework that is prepared under the chairmanship of Professor Kalsi, and he is the only person who has made the document of National Credit Framework, in which the notional hours are given. स्कूल एजुकेशन में 180, हायर एजुकेशन में 120, और टोटल यदि कोई स्टूडेंट PhD करता है तो एट लास्ट, एट द एंड ऑफ द PhD, minimum credit should be earned by a student is 320. Whenever you will study
that national credit framework, या गूगल भी कर लेंगे, सिर्फ उसके मेन फीचर्स भी देख लेंगे, तो यू विल फाइंड कि when a student has completed the PhD, the total number of credits he or she has to earn is 320. So that document is also made under the chairmanship of Professor Kalsi. Then the skill and vocational education, then certification and recognition, matchmaking between US and India higher education institutions, engaging with the private sector to deliberate ways to enhance the educational collaboration between India and USA. Although अभी तक कोई collaboration हुआ नहीं है, but very soon we will be knowing that India और US के education sector में भी MOUs sign हो गए हैं, because with many other countries जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ MOU already signed हो चुका है, एक I think it's now more than 1 year. Next is engagement with United Arab Emirates, UAE. अब UAE में बहुत कंट्रीज हैं जिनके साथ ये MOU साइन हो गया है. ये देखिए आप, प्रोफेसर अनिल सहस्त्रबुद्धे जो AICT के पहले चेयरपर्सन थे, now he is the chairperson of NETF. So he has visited UAE in September 23, and then our Union Minister for Education got this Dharmendra Pradhan. He also went there, and the MOU was signed. How the degree of UAE and the degree of our country India, both countries' degrees, how they can come at par. वो equivalency कैसे establish होगी? So that MOU has signed. Then engagements with Australia, as we have already discussed. इसको बहुत ज़्यादा हम डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे, बस इस यहाँ पर इस पॉइंट में the figure is also given that how much the Australian government is funding to our country, because that will also generate employment. That will also help in boosting our economy. Then 11 institutional MOUs are signed and opening campuses in, this is the name, Deccan University. I was naming the Deccan University and the University of Wollongong. These two universities are coming in the gift city of Gujarat. Then India, Singapore, hackathon. Hackathon to, ma'am, सिर्फ within the universities होता है? नहीं. This is the first time कि हमने hackathon सिंगापुर के साथ भी कर लिया है. Why? Because they are very good in STEM. उनका टेक्नोलॉजी जो है, it is very, very superior. So the event was jointly organized by AICT India and Nanyang Technological University, which is a very reputed university of Singapore, and this university is famous for the technical courses because they are very, very good in that field. You name it anywhere in the country and you will get the job only by the name. अभी आज के टाइम में ऐसे इंस्टीट्यूशन बहुत कम रह गए हैं. पहले हम बोलते थे अरे ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी बहुत नाम था, आज भी नाम है, बट वेरी सॉरी टू से क्वालिटी बहुत डाउन हो गई है, बहुत डाउन हो गई है. एंड व्हेन यू गेट इन द सिस्टम you know so many other things also. Study in India portal. I don't know कितने students को ये पता है. Luckily I got this chance to attend this program when this inauguration was there in India last year. Study in India, the short form is Study in India SII portal. ये लास्ट ईयर ही आज ही के दिन 3rd अगस्त को ही ये इनॉग्रेट हुआ था. एंड व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग माय पीपीटी डे बिफोर यस्टरडे, तो मैंने अपने नोट्स निकाल लिए
कि ओके, क्योंकि ये जब पोर्टल लॉन्च हुआ था ना, तो we three were nominated from our university, the director student welfare, and we two are associate directors in international affairs. So we three went to there in this inaugural program. And there we have seen the website, the portal page also, how to access, what kind of information we have to give to our students. And if any foreign student wants make any inquiry that how we get admission in Guru Gobind Singh Indraprasth University in India, so what we need to tell them. So these are the steps basically, that it's a dedicated website that showcases the best of Indian higher education institution, जिसमें आपको ये बताना होगा कि आपकी यूनिवर्सिटी में बेस्ट क्या है. How we convince that student that he should register themselves to our portal. ये जो SII portal है, this is not for any 1 or 2 or 3 universities. This portal is like, for example, abhi the last slide mein I have told you that there are 173 universities are there. तो वो 173 universities जिनके पास international office है, they all have to register in SII portal. It's like जैसे आपने एडमिशन लिया था गुरु नानक में, तो आपने क्या किया था, GGSIPU के पोर्टल पे अपने आप को रजिस्टर किया था. तो ऐसे ही बहुत सिंपल वर्ड्स में बता रही हूँ, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, उनको एडमिशन इंडिया में चाहिए, तो आपको एक गवर्नमेंट ने पोर्टल बना दिया है लास्ट ईयर से पहले हमारी कंट्री का ऐसा कोई भी पोर्टल नहीं था जहां पर इंटरनेशनल स्टूडेंट अपने आप को रजिस्टर करते थे. गॉट इट? वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एडमिशन, क्योंकि उसी स्टूडेंट का एडमिशन होगा जिसने यहाँ पर रजिस्टर किया है. वीजा एप्लीकेशन में सब इंडियन एम्बेसीज हेल्प करेंगी उनको. With the launch of this portal, it is now mandatory for every international student seeking admission in Indian higher education to register on this portal for academic session 23-24. से ही ये लॉन्च हुआ है, उससे पहले नहीं था. And the portal provides structured mechanism. This I have told you that it will help in the visa processes and a unique ID. Of course, whenever you log in some portal, you get some unique ID for that. So this is all about your internationalization of education, in which I have told you that what is internationalization, what are the recommendations of national education policy, and what are the initiatives which are taken by government for internationalization of education. Now, when we talk about the internationalization of education, global जब हम बात करते हैं, तो साथ में एक global citizenship भी हमारे mind में आ जाता है. And I have seen that in brochure also, the first learning outcome, if I'm not wrong, it was the first only. Yes, the participants will able to acknowledge the significance of G20 in preparation of global citizenship. First learning outcome. तो कैसे होगा? हमें एटलीस्ट ये तो पता हो कि ग्लोबल सिटीजनशिप है क्या, कौन ग्लोबल सिटीजन है, और क्यों हम ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन की बात कर रहे हैं. Likewise, when I started my this presentation, I told you that हमने पहले environment education को compulsory किया, फिर हमने sustainable education को compulsory किया, mandatory किया कि this should be taught, and now we are talking about कि global citizenship education भी हमें पढ़ाना है. क्यों? क्योंकि हमारी values जो हैं वो day by day degrade हो गई. Global citizenship, मैंने साथ ही लिखा है, it is a path to have a borderless world.
जिसकी बाउंड्रीज ही ना हो, तभी हम उसको वन फैमिली बोलेंगे ना। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, कॉमन फ्यूचर, which is good for everyone, not for any one country, for the whole planet, in which we talk about the social, environmental and economical actions, जिसमें हम social actions की भी बात करें। जो भी हम काम करते हैं, social actions यहाँ पर अपना फायदा जिसमें हो रहा है वो काम कर लिया, और हमने ये तो सोचा ही नहीं कि दूसरे को इस चीज से क्या नुकसान हो सकता है, कहीं दूसरा सफर तो नहीं कर रहा है। हम कितनी बार सोचते हैं, हाउ मेनी टाइम्स वी थिंक अबाउट कि वट एवर वी आर डूइंग इज नॉट हर्टिंग एनीवन और एनीथिंग, नहीं सोचते। सो दिस नीड टू बी थॉट। एनवायरमेंटल, हम कितने एनवायरमेंटल फ्रेंडली हैं। We are using so many things. We are wasting water also. We are wasting paper also. How many of us are thinking ki what will be the consequences of these things? Economic, अपना फायदा होना चाहिए बस। जो बिजनेसमैन है वो सोचते हैं कि हमारा प्रॉफिट हो जाए बस। सोसाइटी में या ह्यूमन बींग्स के साथ कुछ हो रहा है तो हमें कोई मतलब नहीं है, हमारी पॉकेट में पैसा आना चाहिए। तो इन तीनों चीजों से जब हम बाहर निकलेंगे तो शायद हम ग्लोबल सिटीजन बन पाएंगे, और तभी हम ग्लोबल सिटीजनशिप की बात कर पाएंगे, और तभी हम ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन को मैंडेटरी सब्जेक्ट नहीं बनाएंगे। It's about how decisions of in one part of the planet can affect the other part. I think we have discussed all these points. Global citizen कौन होगा? जो सिर्फ अपने को ना समझे बल्कि वर्ल्ड को एज अ होल समझे, या बहुत ही यदि हम नैरोअर सेंस में बात करें तो सिर्फ अपने घर के बारे में ना सोचे, पड़ोसी के घर के बारे में भी सोच ले। वहां से तो शुरुआत करें, फिर वी कैन गो बियॉन्ड दैट। What it involves: exploring local and global connections. What are views, values, assumptions? Exploring issues of social justice, both at locally and the globally level. Global issues and applying our learning. जो भी हमने सीखा है उसको सिर्फ सीख के ना बैठ जाएं, उसको अप्लाई भी करें। यदि आज का कुछ लेक्चर हुआ, जो पहले स्पीकर ने कहा या जो मैंने कहा, बस उसको सुन के निकालना नहीं है। हर एक लेक्चर में कुछ चीजें आपको बोर करती हैं, जो आपको अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन कुछ चीजें उसमें बहुत अच्छी भी होती हैं। तो जस्ट ट्राई टू ग्रैप्स ऑन दैट। कई बार आपको लगेगा अरे मैम थक गए हैं, मतलब हो जाता है ना, हम लिसनर्स बहुत अच्छे नहीं होते हैं और बहुत ज्यादा सुन के हमें लगता है कि तो बहुत हो गया। And I think this is the last one, the last slide. Global citizenship education. Now I think we can easily make out the bold words which I have highlighted. Reflect, value, develop, explore, learn, enhance, take action and realize. हम ये सब कर लेते हैं तो we are empowered and we are global citizens also. This we need to do, and we as a teachers, we have to inspire our students for doing this and for ourselves also. And this is the conclusion.
which we have talked about, which we have discussed about, that the theme, again, jahan se start kiya tha, wahin par hi khatam kar rahi hu main. The theme, One Earth, One Family, One Future, is a powerful reminder. ये reminder है हम सबके लिए of the interconnectedness of all life on Earth and need of global cooperation to address the challenges which we all are facing on our planet. Globally ही हम उन चीजों को solve कर सकते हैं. और G20 जो है, it's an international forum which gives us you can say a platform where we can discuss our problems also, and we can listen the problems of the other countries also. And then we both we Indians and you can say the other countries people, we can sit together, we can solve together. That is only the way if we want to have future very strong. And we must recognize that the sacrifice which we made today will ultimately help us in future. ये जिस दिन हमें समझ में आ जाएगा तो we can do wonders. Otherwise, यदि हमने आज sacrifice नहीं किया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे. And thank you. Thank you very much. Now it's time for questions. Now I can remove this. Achha, okay. Yes, question please. Please. As you said that we should not happening around the world, but how we know that what we know is the correct thing, because we cannot just trust the words that media is showing, as we all know that it's not the whole picture. Yes. It might affect our students. Yes. So in that case, what we should do? Very good answer. Very good question. I appreciate this question because this question comes often in my mind also sometimes. How? Why I am asking you? Please, you can sit. We are teachers and we are having more responsibility than the other people. This I realize because I have to give answers to our students also, like the same way you are asking today to me. So, because sometimes when I have to speak in front of you, when you have to speak in front of your students, we always Google. हमेशा Google करते हैं और Google पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है. For example, when I wrote one book, जब मैंने अपने लाइफ में पहली बार बुक लिखा था, तो बुक लिखने के लिए कुछ टॉपिक्स थे जिसको मैंने एक गूगल किया, एक साइट पे देखा कुछ और है और दूसरा सर्च, क्योंकि अब हमारी जनरली आदत होती है कि हम कुछ लिख के गूगल करते हैं और फिर उसके बाद 4-5 फोल्डर्स को ओपन कर लेते हैं ऊपर और वन बाय वन देखते हैं और फिर हम जो हमें थोड़ा अच्छा सा लगता है उसको ले लेते हैं. लेकिन sometimes the information is different. एक साइट कुछ बता रही है, दूसरी कुछ और बता रही है. तो उसमें सिंपल जो what is my suggestion, I think I cannot be 100% true, but maximum truth तक पहुंचने के लिए we have to explore more and more to make it authentic. कि at least हम 10 साइट्स को देखें और जो हमें 7 या 8 बता रही है उस पर भरोसा कर लें, क्योंकि ये हमारे लिए भी मुश्किल है कि हम हर इवेंट या हर जगह पर ये जान पाए जाकर के कि एक्चुअली में हुआ क्या. Because these days media is also hiding so many things. होता कुछ और है, प्रोजेक्ट कुछ और होता है. यदि वो हमारे आसपास कुछ वो ऐसी जगह है तो we are familiar with, लेकिन यदि कहीं दूर है तो हमें पता नहीं लगता, फिर हम मीडिया को ही सुन लेते हैं. तो उसमें ये है कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट करने से पहले
we need to check ourselves, I think 2, 3, 4 times, and get the information from different sources to make it authentic. I think this is the best thing which we can do. और पहले क्या था, बुक्स को हम we rely on books. पहले का टाइम था, but now I am saying we can't rely on books also. पहले जो बुक्स लिखते थे लोग 10-15 साल पहले, वो पूरी लाइफ में एक बुक लिखते थे, 2 बुक्स लिख लेते हैं, क्योंकि किसी को बहुत शौक है 3. अभी एक साल में 2 बुक लिख देते हैं लोग, एक साल में 4 लिख देते हैं, और एडिटेड बुक्स की तो कोई नंबरिंग ही नहीं है. क्यों? बहुत सारे एआई सॉफ्टवेयर्स भी हैं. पहले के लोगों ने तो सिर्फ कॉपी सिर्फ ये कर लिया, कट कॉपी पेस्ट, और वो ये भूल जाते हैं कि एआई आया है तो एआई का सॉफ्टवेयर ऐसा भी आएगा जो पकड़ लेगा कि आपने कॉपी किया है. फिर आपके ये पैराफ्रेजिंग टूल्स आ गए, कोई वर्ड आ गया, ग्रामरली भी आ गया. नाउ एवरीथिंग हैज सम सॉल्यूशन. जो एआई इन सॉफ्टवेयर्स को बना रहा है, वो एआई इन सिस्टम्स को पकड़ने के लिए भी सॉफ्टवेयर बना रहा है. Thank you. I think I have tried to give your answer. Yes, please. Do a degree simultaneously. Yes. So, NCT or AICTE. नहीं, हाँ, वो sorry, that I forget. Law, medical, you can't do. PhD के साथ भी कोई और डिग्री नहीं हो सकती. मैंने in general बता दिया, but these are exceptions. You can't do any degree with PhD. I'm adding one more. AICT का नहीं है बेटा. It's law and medical. BCI and MDI, and with PhD. You can't do any degree. PhD के साथ भी नहीं कर सकते हो. Because it's a professional degree. नहीं, BEd के NCT नहीं कहता बेटा. BEd ML के साथ तो आप कर सकते हो. यूनिवर्सिटी का गाइडलाइंस है या उनकी जो रिकमेंडेशंस हैं वो आप वो कीजिए. वो गाइडलाइंस वही है कि टाइम टेबल क्लास में होना चाहिए. But I think university has not come up with BEd related any such guidelines. GGSIPU has not come up yet. Yes, I do agree with ma'am's point कि सभी यूनिवर्सिटीज की अलग-अलग सेपरेट गाइडलाइंस नहीं, but all universities come under UGC. So UGC has a mandate that the universities they have to उनको मानना ही पड़ेगा. And for this जो गाइडलाइंस है वो ये कह रही है कि आप बीएड यहाँ कर रहे हो, आप 9 से या 10 से 3, 4 हो, 4 के बाद यू आर फ्री. आप कोई ऑनलाइन प्रोग्राम करिए, आप डिस्टेंस मोड से प्रोग्राम करिए, कुछ भी करिए, बस आपके कॉलेज का टाइम टेबल जो दूसरी डिग्री आप कर रहे हैं उसके साथ क्लैश ना करे. दैट इज द ओनली थिंग. तो ऑनलाइन या मतलब डिस्टेंस मोड से या ऑनलाइन करने में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. बट यदि आपने रेगुलर डिग्रीज करनी है तो यू मेक इट श्योर कि एक डिग्री मॉर्निंग शिफ्ट की हो और दूसरी डिग्री इवनिंग शिफ्ट की हो. टाइम टेबल क्लैश हो गया तो फिर वो डिग्री आपकी मानी नहीं जाएगी. क्यों? क्योंकि जहां से भी आप करेंगे, जिस कॉलेज से कर रहे हैं या जिस यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, वो आपको परमिट ही नहीं करेगा. Got it? Okay. Okay. Yes. As ma'am shares it with us, so we'll be duly uploading it on LMS only. All right. जैसे आपने बोला कि हम यूनिवर्सिटी नहीं, वो एज पर यूनिवर्सिटी लेवल पर भी देखते हैं कि यूनिवर्सिटी को करा रही है. काफी यूनिवर्सिटीज ने इसको पेपर कोर्स लॉन्च कर भी दिया है. Some has already done.
Now we are talking about that many are thinking like that. स्कूल लेवल पे अभी बात नहीं हो रही है. स्कूल लेवल पर तो वैल्यूज एजुकेशन के नाम से पेपर है, पेपर नहीं, कोर्स नहीं भी है, तभी उनको इनफॉर्मल वे में टीचर्स आर डूइंग अ लॉट फॉर गिविंग देम वैल्यूज. बट जो हम ग्लोबल सिटीजनशिप जो अभी बात कर रहे थे वो हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं. और हायर एजुकेशन में many universities they have already make it as a compulsory paper. Now few has made it, now many are thinking. So why there is a need that many universities are thinking these days? हम कितना पढ़ाएंगे, हम नमस्ते कैसे करना है, दूसरे को हेल्प कैसे करना है, सबको हम पढ़ाएंगे. तो फिर जो हिडन करिकुलम या नॉन फॉर्मल जो पढ़ाई, जो फिर एजुकेशन का पर्पस ही क्या रह गया. फिर एजुकेशन का पर्पस सिर्फ इतना ही है कि बस आप जो व्हाटएवर कंटेंट इज गिवन यू जस्ट उसको बस क्रैम करो और एग्जाम देके पास करो. एजुकेशन, फिर हमारी जो फर्स्ट लाइन थी कि एजुकेशन इज ओनली द वेपन टू चेंज. क्यों? हम रास्ते पे कहीं जा रहे होते हैं तो हम बोलते हैं अरे ये तो पढ़ा लिखा नहीं, इलिटरेट पर्सन इसको नहीं पता, या इलिटरेट वर्ड भी अपने आप में बहुत नेगेटिव है, ये लिटरेट नहीं है, ये कभी स्कूल नहीं गया इसलिए इसको ये पता नहीं है. तो फिर उसमें और हम भी क्या फर्क रह जाएगा. एजुकेशन is the thing which I think which shows in our behavior, which we can reflect in the actions. So I think you misunderstood because we are talking in higher education और schools में क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं, उनको इतने कोर्सेज हम नहीं पढ़ा सकते, तो उसमें टीचर्स जो हैं वो by their own ways like लंच टाइम है, इकट्ठा एक साथ बैठ के लंच करना है, उनको बोलते हैं शेयर करो, अपने टिफिन को शेयर करो. आपके पास कोई चीज है तो बोलते हैं अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो. तो वो शेयरिंग वाली चीज को इस तरीके से जो है स्कूल में टीचर्स सिखा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं. अब यंग जनरेशन सोच कितनी रही है, दैट इज अगेन अ क्वेश्चन मार्क. यस मैम, अगर लेकिन मैं सिटीजन की बात करूं तो मैंने की बात करी तो आपने बताया था कि फिनलैंड बहुत अच्छा है वहां पर, तो वहां पर हमने स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम करना है. नहीं फिनलैंड नहीं बताया था, असेसमेंट स्टेम सिंगापुर. सिंगापुर में स्टूडेंट के प्रोग्राम कराने चाहिए ताकि जो बेस लेवल है 11th स्पेशली फॉर द स्टेम वो थोड़ा बेटर हो सके. रूट लेवल से स्टार्ट करने की कोशिश करें, रूट लेवल से बिगिन करने की जरूरत है. और हमें ये देखना चाहिए कि सिंगापुर में यदि स्टेम, अभी तो स्टेम वैसे है भी नहीं, तो स्टेम को तो हमने स्ट्रीम कर दिया है, आर्ट्स ऐड कर दिया है. तो वी नीड टू सी दैट व्हाई वी आर सेइंग कि उनका अच्छा है, वो हमसे अलग क्या करते हैं जो हमें वैसा करने की जरूरत है. हम सबको सिंगापुर नहीं पहुंचा सकते और ना ही हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सिंगापुर भी अगेन इज अ स्मॉल कंट्री लाइक फिनलैंड. हम फिनलैंड बोलते हैं एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, वैसा एजुकेशन सिस्टम अभी हमें बहुत साल लगेंगे. फिनलैंड कितना सा है, हमारी दिल्ली स्टेट जितना ही होगा, थोड़ा बड़ा होगा, 2-3 स्टेट्स होंगी, दैट्स इट. तो जब कंट्री छोटी है तो दे कैन डू, but like ours where the population is so huge, वहां ये सब implement करने में it will take time. But who one is stopping us to see that what is good in their education system and how we can incorporate that thing in our education system. So at least we can do that. सिर्फ फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम कॉपी नहीं कर सकते हैं, वी कांट डू. और ना ही हम फिनलैंड जैसा एजुकेशन सिस्टम हम अगले 20 साल में भी बना पाएंगे, नहीं कर सकते. भाषण देने के लिए बहुत अच्छा है, प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल.
because there is a difference of huge population also and a huge size also. But we can understand that what kind of assessment criteria they are having और वो assessment कैसे कर रहे हैं. At least we can begin that kind of assessment in our country, in our own education system. तब शायद कुछ चीजें better होंगी. Yes. Anybody else who wants to ask something? So now we are talking about the internationalization of education, and we're talking about bringing the foreign universities in India. Yes. Seeing the current scenario, we are still struggling to provide a lot of needs to our own citizens. Yes. So will we be able to provide the needs of the foreign students as well who will be coming to IU? Yes, it's a good question. Although you can say it also. When I say that two universities they are coming, Islam and Kuala. So naturally है कि initial level पर उनका जो है faculty भी यहाँ कुछ आए है ना, और उसका फायदा क्या है? What the government is saying, जो working जो जिनको job मिलेगी, they all will be Indians. तो उससे हम employment को भी generate कर रहे हैं, है ना? One thing is कि हम employment generate कर रहे हैं. Second thing is कि Australian government is funding for that. I have seen you that 1.8 million crores. It's a huge amount they are providing us. So infrastructure भी वो बना रहे हैं. उसमें भी जो employment है वो यहीं के लोगों को मिल रही है. So your next question is कि क्या हम उनको उतना quality के साथ दे पाएंगे? I think जो objective है वो तो यही है कि दे पाएंगे. Let's see. I think we have to wait for getting the answer of this question, because we are trying our level best. The government is trying to get all the things done in that way. But let's see. I think it's very soon to give answer to this question. So I think we have to wait for another 2-3 years that whether the objective or the vision behind this is accomplished or not. Any other questions, please? This means it gives satisfaction to me that you have heard. आपने सबने बहुत अच्छे से सुना है. Very good. आपने बहुत अच्छे से बताया. Yes. Any other questions? Ma'am, please take a seat on the stage itself. Thank you. Thank you so much, ma'am, for such an informative session. As you commenced your session with the quote, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Here, we would like to reiterate the G20 message that says education is a key driver of sustainable development and economic growth. As you familiarized us with the core meaning of internationalization of knowledge, it added to our comprehension. Ma'am, as you highlighted the role of education in upholding the vision of one earth, one family, and one future, it further validated the relevance of the chosen themes for our ongoing FDP here at Guru Nanak College of Education. As you enumerated the successful education initiatives being adopted by various countries of the world, we can surely learn from them and borrow the ones that may best suit our interest. The recommendations of NEP 2020 in line of internationalization of education as presented by you, ma'am, along with the revolutionary changes that are taking place in Indian higher education system has made all of us optimistic of the Indian education. Ma'am, as you informed us about the Indian educational collaboration with countries like Australia, UAE, Singapore, and prospects of the same with the USA, it tremendously added to our knowledge.
as you shared your experience of being witness to the inauguration of SII portal at this time last year. You shared with us so many points of relevance. Ma'am, as you went on to discuss the concept of global citizenship, we do acknowledge that there is still a long way to go and a lot to be done on our part as well, as we all here aspire to be a global citizen. Thank you so much, ma'am. Thank you. So, dear faculty members and students, PPT also, na? yes, I'll just ask. I think they have taken it. We have it in other systems. No, we don't not have. yet. Because there are so many things, na? Students saying so. Excuse me, please check. The PPT is loaded. This is which one is not? This one. For this? Right. Please check. Thank you so much, ma'am. Taking your pen drive. Yes, I have to be beautiful. I can't forget. So many, so much data is in. I've given the schedule, will you receive it?
Good afternoon, sir. Please settle down. It is both an honor and a pleasure to welcome you all to the second half of the fourth day of the week-long faculty development program on G20, One Family, One Future, a College of Education. This brings us to the auspicious moment of inaugurating the second half of the fourth day of the ongoing faculty development program, for which I would like to invite our Honorable Resource Person for Technical Session 3, Dr. Amit Ahuja ji, along with our Principal Ma'am, Dr. Jyoti Bala Ma'am, to kindly light the auspicious lamp. We'll be proceeding with the lamp lighting ceremony. We also have Anjali ma'am in attendance sitting at the back. Ma'am, if you can also join in this. Ma'am, please, ma'am. A picture. They say, light the lamp of love in your heart, the lamp of abundance in your home, the lamp of compassion to others, the lamp of knowledge to dispel the darkness of ignorance, and the lamp of gratitude for the abundance that the divine has bestowed on us. Tamso Ma Jyotirgamaya, lead us from darkness to the light. And it is now time to start with today's felicitation ceremony for the second half of the ongoing week-long faculty development program. And as we celebrate these remarkable accomplishments, I would like to quote, "What counts as life in life is not the mere fact that we have lived. It is what difference we have made to the lives of others that will determine the significance of the life we lead." I would therefore like to humbly ask Principal Ma'am to kindly bring Sir up on the stage so that we can offer a small token of love and appreciation. Ladies and gentlemen, we have Dr. Amit Ahuja on stage, Associate Professor, University School of Education, Guru Gobind Singh Indraprastha University, receiving a small token of love and appreciation from Guru Nanak College of Education. So if you may. If I may speak for the audience of the week-long Faculty Development Program 2024 here at Guru Nanak College of Education, after attending it for 4 consecutive days, we recognize the importance of international collaboration and mobility in education, which enhances quality, promotes mutual understanding, and prepares students for a globalized world. To elaborate more on this theme, we have amongst us Dr. Amit Ahuja as the resource person for the scheduled technical session, that is technical session number 3 for today. Sir is a recipient of 32nd Dr. S. Radhakrishnan Memorial National Teacher Award 2016 and Best Paper Award 2023 for paper presentation in the NAC sponsored all right. GNCE 2000. Stop. So as I was telling you all, Sir is the recipient of 32nd Dr. S. Radhakrishnan Memorial National Teacher Award 2016 and Best Paper Award 2023 for paper presentation in the NAC sponsored 2 days national conference on best practices of research and innovation in STEAM higher education, organized by Srimati Dev Kunwar Nanalal Bhatt Vaishnav College for Women, Chennai, Tamil Nadu.
Sir is an associate professor at the University School of Education, Guru Gobind Singh Indraprastha University, which I also mentioned earlier, has obtained bachelor, master, and doctoral degree in education from Department of Education, University of Delhi. Sir also obtained with distinction in chemistry from Jamia Millia Islamia, New Delhi. Sir was awarded Merit Scholarship for B.Ed by Department of Education, University of Delhi in the year 1997-98. Sir has supervised more than 100 M.Ed dissertations with some of your students sitting here amongst us as well, sir. There's a group of students that are sitting together. He was a member of ICT curriculum group to work out curricula for ICT in education developed by Central Institute of Education Technology, NCRT, New Delhi. He has presented research papers in national and international conferences, seminars in India and abroad. Sir has visited foreign universities, namely National Sun Yat-sen University, Taiwan, University of Sussex, England, University of Toronto, Mississauga, Canada, and Singapore University of Social Sciences, Singapore. Sir has chaired the technical sessions in the international conferences at University of Sussex, United Kingdom, and University of Toronto, Canada. Sir has also delivered video lectures for DLED program on NIOS channel number 32, Swayam Prabha, and IGNU channel number 32, Teacher Education. Sir has developed e-content for School of Education, Central University of Punjab, Center for Distance and Open Learning, Jamia Millia Islamia, HRDC, Mizoram, CIET, NCRT, and NCTE. Sir has regularly published research papers, articles, and concept papers in national and international journals of repute. He is in the editorial board of national and international peer-reviewed journals. Sir has been invited in various capacities in professional development programs at institutional and university levels like this one. Sir is a lifetime member of Indian Association of Teacher Educators, All India Association of Educational Research, Global Educational Research Association, Delhi State Science Teachers Forum, Teaching and Education Research Association, and All India Science Teachers Association. Sir was elected in the executive body of AIAER and IATE. There's a lot more to Sir's credit, but so you're the best person to enlighten them now with your vision on this theme. And as you have chosen internationalization of education, we would like to hear it from you, sir. GNCE folder होगा ना PPT folder नहीं है PPT आ रही है सर इसी में है हाँ ये आ रही है this one So to be staying here at the podium of everything because we might live we are streaming live on video. इसको वो उसमें मुझे मूव करना होगा ना We also have PPT presenter if you want. मूव हो जाए यहाँ से next slide. Respected Principal Ma'am of the host institution, our fellow colleague Dr. Anjali, my dear scholars of my own, faculty member of this institution and dear scholars of this institution. It's my pride privilege that I'm here in this college and you have invited me on previous occasions also. The only thing that was missing in my CV, शायद ये पुराना ही बोल के गई हैं, कि I was also awarded Best Teacher Educator Award 2023 last year also. Recently, just 15 days ago, I was in Sydney, Australia for paper presentation in Mathematical Congress. I represented my university
2392 papers from 97 countries were selected. One of them was mine. So you mean 54 papers from all over India were selected, and one of them was mine. So that I like to update. So CV please recent ले लिया करें, डायरेक्ट रिसोर्स पर्सन से लिया करें. वेबसाइट की चीजें आउटडेटेड होती हैं, सीधा सेंटर पे जाके बात कीजिए. कोई बात नहीं, इट्स ओके, दैट्स हाउ डू वी लर्न. देखिए, मुझे टॉपिक दिया गया इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन. अभी मैम भी बोल के गई हैं ग्लोबलाइजेशन पे. सो बजाय इसके कि मैं कंसेप्ट आपके आगे एक्सप्लोर करूं, मैं भूमिका इसकी बांध देता हूं. ये इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन वास्तव में ग्लोबलाइजेशन ऑफ एजुकेशन से शुरू हुआ है. और ग्लोबलाइजेशन ऑफ एजुकेशन कब हुआ? 1991 के अंदर एक वार हुई थी, अमेरिका वर्सेस इराक. कोई ध्यान हो किसी को? कहीं आपके जन्म से पहले की बात है. एक लड़ाई हुई थी, कुछ वो पढ़ लीजिएगा नेट के ऊपर. और उसका वार का पार्ट 2 2003 में भी हुआ था, जब यूएस ने फिर इराक पे हमला किया था. लेकिन तब वजह कुछ और थी, 91 में कुछ और थी. तो उसमें इराक ने कुवैत पे कब्जा कर लिया था, उसके ऑयल सेंटर्स पे, उसको छुड़ाने के लिए, क्योंकि कुवैत से यूएस ऑयल लेता था. यूएस ने बचाव किया, फिर तो सारी इनकी आर्मी आ गई, फ्रांस यूके सब आए थे. हमारा भी नाम उसमें उछला था, भारत का. लेकिन उसमें यही कहा गया कि हमने किसी की मदद नहीं की. ये बच्चे, तीनों बच्चे, या तो चुप हो जाए या प्लीज बाहर जाके खेल लो थोड़ी देर. हो रहा है, इतनी जानकारी दे रहे हैं आपके जन्म से पहले. तो उसमें इंडिया पे भी उंगली उठी थी कि आपने मदद क्यों की. तो उसमें कहा गया कि हमने मदद किसी की नहीं की थी. प्लेन इनके लैंड की, हमने फ्यूल दिया, पैसा लिया, हमने बिजनेस किया है. वो हम कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल प्रोटोकॉल होता है कि अगर कोई भी प्लेन आपके ऊपर से गुजर रहा है और आपसे वो उतरने की परमिशन मांगे, आप उसको देंगे, चाहे उसको घेर लेना नीचे उतर के, क्योंकि जान किसी की नहीं जानी चाहिए, क्योंकि 0% सर्वाइवल रेट है. वो आपसे फ्यूल मांगता है तो नीचे आने दीजिए, नहीं है तो ऊपर जाके दीजिए. कुछ प्रोटोकॉल होते हैं. तो हमने यही कहा कि ठीक है भाई, वो आए, हमने पैसा लिया और बिजनेस करा. मदद नहीं की. मदद होती है हम फ्यूल देते और आप जाइए यहाँ से. एनीवेज, तो ग्लोबलाइजेशन वहां से चली कि चीजों को मेक फ्री अक्रॉस द बॉर्डर, लाइक ट्रेड एंड एजुकेशन. आज से 25 साल पहले नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था यहां से लेके श्रीलंका जाना भी. आप जाके दिखा दीजिए. एयर, ये इसे पालम हवाई अड्डा कहा जाता था, इसे आप आईजीआई कहते हैं आज की डेट के अंदर. आपकी प्लेन की टिकट इतनी सी होती है, 10 पेज की तो उसकी प्लेन की टिकट होती थी. सोचना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. इस एयरपोर्ट के ऊपर, आई वाज इन 6th स्टैंडर्ड, 3 या 4 प्लेन खड़े होते थे और सारे आंखें फाड़ के देखते, अच्छा हवाई जहाज ऐसा होता है, छत के ऊपर से निकलता. बट आई एम इंटेंडिंग टू से, वो पीरियड था जब ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ, और करते करते वो इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन पे शुरू हुआ. और आज ये आलम है कि भारत का एक राज्य है पंजाब में, जहां बच्चे कभी खेलते थे, एडोलसेंट एज के लोग थे, सब कनाडा, यूएस, सिंगापुर वगैरह सब जा चुके हैं. गलियों की गली खाली हो गई है. अभी मैं रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया में ही था, वहां मिला, मैं हैदराबाद के लोग बहुत हैं वहां पर, सिडनी में. तो मैंने पूछा, मैंने कहा आपने किस कोर्स में एडमिशन लिया? कहते हैं इसमें. मैंने कहा किस यूनिवर्सिटी में? कहते हैं इसमें. मैंने कहा पढ़ते कब है आप? स्टोर पे तो ये सर्व कर रहे हैं हमारे यहाँ इसके अंदर. कहते हैं हमें इसमें इनकम ज्यादा है. और जब वहां असाइनमेंट के बेस पर आप पास होते हो, एग्जाम नहीं होते, लेकिन असाइनमेंट में 0% प्लेजरिज्म चाहिए. मतलब माफी नहीं है, अगर प्लेजरिज्म मिली तो एडमिशन कैंसिल है. तो बहुत संभल के हमें काम करना पड़ता है. तो मैंने कहा व्हेन डू यू स्टडी? आप सारा दिन तो स्टोर में काम कर रहे हैं, भागा दौड़ी कर रहे हैं, और फिर पढ़ते भी. इमेजिन अपने आप को देखें कि आप फुल टाइम यहाँ रह रहे हैं और फिर पढ़ना है, लेकिन आधा दिन जरा किसी रेस्टोरेंट पे या स्टोर में जॉब कर रहे हैं और फिर पढ़ना है. दो अलग अलग स्टोरीज होंगी. दे सेड वी मैनेज दिस. सो ये मैंने आपको रूप दिखा. इसी तरह मैं कनाडा में भी गया, जहां भी गया मुझे इंडियन बच्चे मिले हैं वहां पर, भारतीय मिले हैं वहां पर. कई ऐसे मिले जो काम नहीं करते, कि हम फुल टाइम स्कॉलर हैं, हमें फेलोशिप मिली है, हम पूरा टाइम यहाँ देते हैं. अब उनकी एनर्जी लेवल इमेजिन कीजिए और जो स्टोर पे काम कर रहा है उसकी कीजिए. तो इतना आसान नहीं होता यहाँ से वहां जाकर के काम करना. हमारे यहाँ इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन वास्तव में बहुत पहले से चला आ रहा है. नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय, उम्मीद है नाम नहीं सुने होंगे, ये वहीं की देन थी. जब बाहर से लोग काम करने आते थे हमारे यहाँ, पढ़ने आते थे, ये तब का चला आ रहा है. हमें सोने की चिड़िया कहा जाता था, विश्व गुरु कहा जाता था. लेकिन अभी पीछे कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं, एनटीए, सीयूटी वगैरह की, या आपका नीट वगैरह की, तो छवि थोड़ी सी धूमिल हुई है. कहने का अर्थ यह है कि इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन बहुत पुराने समय से हमारे यहाँ रहा है. एनईपी ने भी बातें की हैं, G20 ने भी की. आई विल टेक देम, आई हैव सम फिगर्स फॉर यू आल्सो. लेकिन थोड़ा सा अगर मैं कहूं डेफिनेशन, मैडम मेरे से पहले अच्छी तरह बोल गई होंगी, मैं भी एक रिचुअल की तरह आपके सामने पढ़ देता हूं. व्हाट इट इज बेसिकली, ये प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग सम अदर कंट्री
in your teaching, practice, research, service functions of the institution. हमारी आईपी यूनिवर्सिटी का भी डायरेक्टरेट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स है, जिसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट का एडमिशन होता है, उनके नॉर्म्स अलग चलते हैं, उनका ब्रोशर अलग है, पूरा डायरेक्टरेट एस्टैब्लिश किया गया। यूनिवर्सिटी के कई MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए गए हैं चाइना के साथ और कई यूरोपियन कंट्री के साथ, जिसके तहत फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम होता है। वी आर वेरी अहेड ऑन दिस ट्रैक। सो डेफिनेशन तो आपके सामने लिखी है, किसने कब दी है, नोट कीजिए। 97 की डेफिनेशन है, जब ग्लोबलाइजेशन शुरू ही हुआ था, इंटरनेशनलाइजेशन नहीं हुआ था। अगली डेफिनेशन 2003 और 7 की है, तब इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन शुरू हो गया था। लेकिन ये काफी रिच लोग ही जा सकते थे। अब तो बैंक में आपको एजुकेशन लोन मिल जाएंगे, काफी सुविधा है हमारे पास, इसमें आप लोग कर सकते हैं ये। सो इंटरनेशनलाइजेशन एट नेशनल सेक्टर, एट इंस्टीट्यूशनल लेवल, फॉर व्हाट, फॉर प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग देयर एजुकेशन सिस्टम विद अस। ये इसके अंदर मुद्दे आया करते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है इसके अंदर, यही है कि करिकुलम डिजाइन, एक ऐसा करिकुलम हो। हमारे यहाँ करिकुलम में क्या है, नंबर, आपके मार्क्स देखे जाते हैं। आप बड़ी मेहनत करते हैं, आपके 10th के मार्क्स क्या दिन थे जब आप मेहनत करते थे, 12th के थे, लेकिन बातें याद हैं किसी को, मतलब ही नहीं। यही फर्क है। हम मार्क्स के आपको आपकी वेटेज देखते हैं, बड़ा इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, बड़े अच्छे नंबर आते हैं, नंबर आपके मार्क्स एकेडमिक अचीवमेंट है, टू बी नोटेड। इंटेलिजेंस आपकी कुछ और है। So those who are 50 in academic criteria, they become the civil servants of this country. Now see, what IQ do they have? Even the civil servant, they are not so academically brighter gold medalists of the country. I don't say all the civil servant, maximum of them. But how beautifully they run the country. Hats off to them, salute to them, by virtue of their intelligence. तो बाहर इंटेलिजेंस देखी जाती है, आपके स्किल आपकी इंटेलिजेंस से ही आते हैं। जिंदगी भर हम इंटेलिजेंस का ही खा रहे हैं। मुझे याद है कि 97 में मैंने गोल्ड मेडल लिया था, उसके अंदर साफ आपके सामने कहूं, नहीं इतना याद होता, लेकिन तब कितनी मेहनत हुई थी वो तो मैं ही जानता हूं। कि इसी तरह आपके ऊपर दौर पे आया, तो करिकुलम में स्किल के ऊपर हमें मेहनत करनी है, बाहर स्किल चला करते हैं, आपके मार्क्स नहीं। हमारे प्लेजरिज्म, अभी कोई असाइनमेंट दूं मैं, फट के अभी सारे चैट जीपीटी पे जाएंगे, विकिपीडिया पे जाएंगे और मुझे भर भर के भेज देंगे, और हम भी लेंगे। और वहां मैंने अभी का उस लड़के ने कहा कि 0% प्लेजरिज्म चाहिए, करिए बात। अब तो कितना वो आगे निकल गए। तो इस तरह से करिकुलम को देखिए, कंटेंट क्या है, डिलीवरी, इवैल्यूएशन। अभी भी मुझे बताइए कि हम अभी बीएड और एमएड के सिलेबस के अंदर पियाजे को पढ़ा रहे हैं, जीन पियाजे को। एमएड के अगर बच्चे हों बैठे, आपने पढ़ा होगा यहाँ पर, बाकी किसी एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट ने काम नहीं किया कि हम उसको एमएड में भी ले लेते, लेकिन जीन पियाजे को 2 बार पढ़ाना, ये तो कोई बात नहीं हुई। कुछ औरों ने भी तो काम किया होगा। तो इसी तरह करिकुलम का कंटेंट आप अपडेट कीजिए। डिलीवरी हमारे लेक्चर मेथड चलता है, लेकिन बाहर I saw by my own eyes, University of Sussex, England. कमरे में से निकल रहा था, देखा तो एक बैठे थे, एक सज्जन, वो लैपटॉप पे लगे, और एक आप जैसे 4-6 बच्चे एक घेरा बना के इधर बैठे हैं, 2 उधर बैठे हैं, ये सब है। तो मैं उससे कहा, मैं आई वांट टू मीट दैट पर्सन, ही इज फैकल्टी। कहता नो, यू कांट मीट हिम, ही इज हैविंग क्लास। मैं कहा नो, ही इज बिजी ऑन लैपटॉप। कहता है सर क्लास हो रही है वहां पर, आप देख नहीं रहे हैं, उसके अंदर वो डिलीवरी जो इस पे चल रही है, बच्चों को उधर मिल रही है, जाके बोल नहीं रहे हैं आपस में, दे आर वर्किंग ऑन द कंप्यूटर। इसी तरह जब ताइवान में हम वहां पर गए, तो हमारे कैंटीन में क्या होगा, बढ़िया सा आपका पिज्जा, स्नैक्स, बर्गर, क्या चीज नहीं है जो आपको मिलेगी। और उनके कैंटीन में मैं गया था, 10 तरह की तो टी थी, एक ग्रीन टी, एक ब्लैक टी और आइस टी और कोल्ड टी, नथिंग अनहाइजेनिक, नथिंग फ्राइड, नथिंग स्पाइसी। ढूंढना मुश्किल हो गया था। हमने पूछा, हमने कहा क्यों ऐसा नहीं, कहता है हेल्दी फूड देंगे तभी तो खाएंगे, अगर हम ही अनहेल्दी प्रोडक्ट बेचेंगे तो बच्चे तो लेंगे ही। Now see their ideology for their students कि हम कैंटीन में अनहेल्दी चीज बेचेंगे नहीं। 4 बजे के बाद शाम को वहां पर आपको स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना पड़ेगा। पड़ेगा मींस पड़ेगा, वहां 4 क्लासेस हो गई, चलिए स्टेडियम में 4 से 6 बजे तक। और ये नहीं कि खाली जाके ताली बजा के आ गए और खाली देख के आ गए, हिस्सा लेना पड़ेगा। आप दौड़ में हिस्सा लेंगे, आप बैडमिंटन खेलेंगे, आप टेनिस खेलेंगे, आप लॉन्ग जंप के, पूरा रिकॉर्ड रखा जाए। ये नहीं कि खाली खेल के आ गए, क्या परफॉर्मेंस रही, 100 मीटर दौड़े, कितने सेकंड आए थे, बैडमिंटन के कितने सेट्स आपने जीते हैं, लॉन्ग जंप में हाइट कितनी आपने ली है, वगैरह वगैरह, पूरा डाटा। नतिया दे आर स्लिम, ट्रिम, वेल बैलेंस्ड पीपल एंड सी आवरसेल्व्स वी आर रशिंग टू जिम्स एंड सो ऑन। आ रही है दिक्कतें के अंदर। तो एक विजन होता है जो इंटरनेशनल लेवल पे एजुकेशन को, पहले तो बच्चों के फिटनेस से लेके चलना होता है। हम उन्हें कैंटीन में हेल्दी फूड दें ना, वो खाएंगे। हम उन्हें स्पोर्ट्स में लाएं, वो फिट रहेंगे। नंबरों का प्रेशर हम उन पे ना डालें, स्किल पे ध्यान रहें, काम करें, मेंटली हेल्दी रहेंगे वो। तो और क्या चाहिए हमें। और बजाय टीचर गला फाड़ फाड़ के यहाँ बोले जा रहा है, इससे अच्छा इंटरनेट पे बात की जा रही है, डाटाबेस आ जा रहा है, गूगल क्लासरूम बना, आप बाद में भी देख ली। बट दे स्टूडेंट वर्क ऑनेस्टली। व्हाट आई फाइंड हियर इज दैट कि बच्चे लोग आते नहीं है क्लास के अंदर, क्लासेस के अंदर, और एक क्लास के लिए क्या जाना, नेट से देख लेंगे।
याद रख लीजिएगा, मैगी आपकी भूख मिटा सकती है, आपकी सेहत नहीं बना सकती। इंटरनेट से आपका काम चल जाएगा, लिख देंगे, नंबर भी आ जाएंगे, बट आपके नॉलेज या स्किल डेवलपमेंट नहीं होगी, फॉरगेट इट। मैं कह रहा हूं, यू विजिट, यू कम टू क्लासेस डे बाय डे, यू अर्निंग डे बाय डे, क्योंकि एजुकेशन इज ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन। हमारे यहाँ होगा, आपके अंदर ऐसे हो गया, 12th के बाद मैंने ग्रेजुएशन एसओएल से कर ली, एमएससी में एमए मैंने इग्नू से कर ली, और बीएड रेगुलर करनी आनी पड़ी क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डेंस से नहीं होती, वरना ये भी हम कर लेते हैं। तो मुझे बताइए, जो आदमी 12th क्लास तक रेगुलर गया, उसके बाद सीधा वो दर्शन इंस्टीट्यूशन में बीएड में देने आ रहा है, डज द पर्सन बी एंटाइटल्ड टू बी ए टीचर? वो खुद जब एज ए स्टूडेंट मोड में नहीं रहा रेगुलर में, वो स्टूडेंट को क्या पढ़ाएगा, क्या उनकी टैकल करेगा? क्योंकि जब आप डेली आते हैं, बच्चों में कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, बच्चों को लाइन लगाना, उन्हें डिसिप्लिन करना, प्रेयर कराना, ये स्किल है आपके। ऐसा नहीं है कि ये आप ऐसे बन जाए, आपका काम खाली बोर्ड पे लिख के चले जाना, होमवर्क देना और कॉपी चेक करना, ये नहीं है। यू आर ए टीचर। तो जिसकी खुद की पर्सनैलिटी नहीं है, वो रेगुलर नहीं आया, वो क्या वो रेगुलर पढ़ाएगा? और यही वजह होती है कि जब 7:30 बजे का स्कूल लगना होता है, ऐसे बच्चे फिर काम नहीं कर पाते, 6-7 महीने बाद घर बैठ जाते। इस पेशे की, इस प्रोफेशन की नवैयत, इसकी सेंसिटिविटी को समझिए थोड़ा सा। तो इंटरनेशनलाइजेशन लेवल तक जाना है, तो नेशनल लेवल पे तो हम अच्छा काम करें। तो रिसर्च, पेटेंट्स एंड इनोवेशन, हमारे यहाँ रिसर्च में मेटा रिसर्च चल रही है आज की डेट में। फैकल्टी से मैं कहूंगा, मेटा रिसर्च ये होती है कि 10-12 पेपर पकड़े, उनका एनालिसिस मैंने 11वां पेपर मैंने लिख दिया कि हाँ जी 10% लोगों ने इंटरव्यू टूल यूज किया है, 15% ने इंडिया से बाहर स्टडी किया, बस उनका काम करके मैंने च्यू करके मैंने रिट्रीव करा। इट्स कॉल्ड मेटा रिसर्च। काइंडली डोंट गो फॉर दैट। अपनी रिसर्च आप कीजिए। वहां पर मैंने सेशन अटेंड किया, अगर फेसबुक पर डाले भी थे, वीडियो बेस्ड रिसर्च वहां पर थी, वीडियो बेस्ड रिसर्च मैंने भी अटेंड किया। कोई फॉल्ट उनके भी थे, उनको भी अप्राइज करा। पीपल आर गोइंग अहेड ऑफ अस इन रिसर्च एंड व्हाट वी आर डूइंग। एक टेस्ट लिया, आगरा से मंगा लिया, बच्चों में एडमिशन करा, टी टेस्ट लगाया, हाँ जी बॉयज की इमोशनल इंटेलिजेंस गर्ल्स से ज्यादा है, गर्ल्स की एकेडमिक एंजाइटी बॉयज से ज्यादा है। दैट्स माय रिसर्च पेपर। समझ रही होगी मैं क्या बात बोल रहा हूँ। फॉर व्हाट पर्पस एकेडमिक एंजाइटी बच्चों की ज्यादा है, किसकी कम है? वी आर नॉट अकाउंटिंग, वी आर लैकिंग द कंपोनेंट ऑफ व्हाई इन आवर रिसर्च वर्क, दे हैव। तो थोड़ा सा यहां पर हमें देखना होगा। ग्रेजुएट स्टडीज, ज्वाइंट डिग्री प्रोग्राम अब आ रहे हैं, इसके अंदर ट्रेनिंग डिग्री, ड्यूअल डिग्री, ये सब आपको मिलेंगे इसके अंदर। एनईपी के अंदर काफी अच्छी बातें हुई। एबीसी, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की बात हमने कही है, ये आएगा तो मैं बोलूंगा इसके बारे में। स्टूडेंट फैकल्टी मोबिलिटी, अगर आप यूनिवर्सिटी के थ्रू जाएं तो आप वहां यू विल स्टे देयर, जो which you can dream only, but it can be materialized through this process. Then international foundation program है, इसके अंदर ये सब लिखे हैं आपके सामने। क्रॉस बॉर्डर एजुकेशन, दैट इज बॉर्डरलेस एजुकेशन। इसमें आपको हैरानगी होगी, यूएई के स्टूडेंट भी में आते हैं पढ़ने। 5% स्टूडेंट यूएई के हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पर नहीं है काम। तो इसमें ओपन कोर्स वेयर मटेरियल, हमारे इग्नू इस मामले में काफी है। 86 कंट्रीज के अंदर इग्नू के सेंटर हैं। तो ये सब क्या क्या इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन ही तो है कि हमारे इंस्टीट्यूशन को वहां पर जगह मिली है। एजम्पशन इसके अंदर क्या है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन के अंदर, कि हमें एक ग्लोबल, एग्लिटेरियन, डेमोक्रेटिक, ये सारे वर्ड लिखे, डाइवर्स, प्रोडक्टिव, सस्टेनेबल और अकाउंटेबल सोसाइटी का निर्माण करना है। अकाउंटेबल क्या? जिम्मेदारी। हम एज ए पेरेंट अपने बच्चे से पल्ला नहीं झाड़ सकते, चाहे वो पढ़े या ना पढ़े। तो हम एज ए टीचर अपने विद्यार्थियों से पल्ला नहीं झाड़ सकते, चाहे वो कॉलेज आए या ना आए। दैट्स इट। ये दिन आपको देखना पड़ेगा जब आप स्कूल में जाएंगे। अभी आप इस तरफ है, यू आर एंजॉयिंग देयर, बट कम टू फेस द म्यूजिक ऑन दिस साइड आल्सो। अकाउंटेबिलिटी यही होती है कि आप ऐसे नहीं छोड़ सकते उसको। एक क्लर्क शाम 5 बजे के बाद कहेगा कि मैं अवेलेबल नहीं हूं, कल बात करना, मेरी छुट्टी हो गई। एक टीचर नहीं कह सकता। वो 24/7 मोड में, एक बच्चे को रात को एक पैनिक अटैक आ गया, कल पेपर है उसका, और आपको फोन करता, मैडम यस सर मुझे टेंशन हो रही है, प्लीज हेल्प मी, तो हम बोल देंगे सॉरी कल बात करना, मेरी ड्यूटी खत्म हो गई है। कैन वी से दैट्स द डिफरेंस बिटवीन अस एंड ए नॉन टीचिंग जॉब। अकाउंटेबिलिटी ये होती है। सस्टेनेबल का मतलब है हम इस दुनिया को क्या दे करके जा रहे हैं। एक पॉल्यूटेड एंड पॉपुलेटेड वर्ल्ड, यही है ना, अंतहीन पॉपुलेशन। कहीं आप जाइए लाइन लगी है, मंदिर गुरुद्वारे में प्रसाद लेने की लाइन लगी है, मेट्रो की लाइन लगी है, मॉल में जाइए वहां लाइन लगी है, दर्शनों के लिए जाइए वहां लाइन लगी है, मनाली जाना है वहां लाइन लगी, पेट्रोल पंप पे जाने, कहाँ नहीं है। चीज का एक ही बीमारी, पॉपुलेशन। इस कमरे में 40 आदमी बैठे, इसी कमरे में 400 आदमी लाके खड़े कर दूं, खड़े होने की जगह नहीं, तो कहीं तो बात है। तो सस्टेनेबल क्या है कि आप दुनिया को क्या दे जा रहे हैं। पॉपुलेशन तो है ही, पॉल्यूशन भी हम कोई कसर नहीं छोड़ रहे। गाड़ियां देख लीजिए,
मेट्रो कितनी चला दी, लेकिन गाड़ियों का प्रेशर वही है. सो व्हाट वी आर गिविंग, हमें एक सस्टेनेबल वर्ड देना है. प्रोडक्टिव, प्रोडक्ट मीन थिंग्स आर रिसाइक्लेबल. क्या लैंड रिसाइक्लेबल है? हम एक ही फसल को बार बार कर करके हम उसको खत्म कर रहे हैं. डाइवर्स, क्या हम डाइवर्सिटी को एक्सपेक्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं? अगर कोई एक से अफ्रीकन कंट्री का आ जाए, कैसे हम उसको देखें, कैसे हम परसीव करें? क्या हम उसे बैठने को भी एक्सेप्ट करेंगे? अंदर ही अंदर तो कहीं दूरी रहेगी. यहाँ ये ठीक नहीं है. एक्सेप्ट द डाइवर्सिटी. वी नीड टू एक्सेप्ट द डाइवर्सिटी. डेमोक्रेटिक मीन्स ऑल आर इक्वल. आर रियली इक्वल? आर रियली ऑल इक्वल? सभी है, लेकिन ये किस बात का की, किस बात की? तो किस बात का फिर इक्वालिटी आ गई. तो इस तरह से एक सोसाइटी की कल्पना की गई है इस इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन के अंदर, ताकि एक्सीलेंस मिले टीचिंग रिसर्च कम्युनिटी सर्विस के अंदर क्या और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे हमारी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व किया जा सके. जो कॉमन प्रॉब्लम इस समय सभी दुनिया के आगे है, कैन यू गेस? टेररिज्म. हर कंट्री के आगे है, कोई यूएस तक को नहीं छोड़ा. 9/11. एक और घटना डाल के देख लेना मेरे जाने का, एयर इंडिया 182 कनिष्का बॉम्बिंग. दिल दहल जाएगा इसको पढ़ करके. इसकी यूट्यूब पे इसकी फिल्म भी है. आंखों से पानी आ जाते हैं जब उनकी सुनते हैं. वो मूवी फ्लैशबैक में चलती है और नैरेटिव्स हैं उसके. यू विल सी कि वो क्या घटना थी. अब उस पर टाइम मैं नहीं लूंगा. हिला के रख दिया था इसने. तो ये टेररिज्म जैसी प्रॉब्लम सबके सामने, कोई देश अछूता नहीं, कम या ज्यादा. तो एजुकेशन जैसा एक मुद्दा है जिससे कोई देश अछूता नहीं है. ये पॉजिटिव साइड पर है जिसपे वर्कआउट करने की जरूरत है. देन आफ्टर दैट नर्चरिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज एंड पेट. जब ये कॉपी हो रहा है, इंटरनेट मोबाइल सबके हाथ में, उसका इंटेलेक्चुअल कॉपी भी होता है. और ये ध्यान रख लेना, जब आप प्लेजरिज्म करते हो पकड़े जाते हैं तो उस समय इस बात की क्षमा नहीं है, सॉरी पता नहीं था, आगे से ध्यान रखें, गलती हो गई थी. लॉ हैज नो एक्सक्यूज. सो बी वेरी केयरफुल. आपको जो सुबह गुड मॉर्निंग और गुड नाइट के आप जो मैसेज फॉरवर्ड करते हैं, ध्यान से देखना, उस पर एक आदमी का नाम भी लिखा होता है, स्नैपचैट, और कभी कभी आप कर देते हैं. इसका मतलब उस ओनर की मंजूरी है कि आप इस पोस्ट को फॉरवर्ड करें, उसका फायदा जा रहा है. लेकिन अगर वो प्रोटेक्टेड राइट्स में उसको ले आए और फिर आपने कर दिया, यू मे बी बिहाइंड द बार्स. कि आपने उस आदमी से परमिशन क्यों नहीं ली इस गुड मॉर्निंग की पोस्ट को भेजने के लिए. सो बी वेरी केयरफुल. कभी लिखा होता है प्रोटेक्टेड, कॉपीराइट, ये सब आप ऐसे नहीं कर सकते. तो ये इसके अंदर ये आ रही है कि हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को गवर्न कर रहे हैं. इंटरनेशनलाइजेशन की इसमें जरूरत है. और 21st सेंचुरी जॉब मार्केट. क्या हमारे बच्चे आज लैपटॉप पे हम टाइप करते हैं, ये लिख सकते हैं इतनी देर तक? स्टेमिना है? एसी में घूमने की आदत है, खड़े होकर बात कर सकते हैं? और हमें जॉब चाहिए, तो जॉब को हम क्या दे रहे हैं बदले में, ये भी तो अपने अंदर कर देखें. जो बच्चा एक क्लास के लिए डेली नहीं आ सकता, वो जॉब के लिए जाएगा. मान लीजिए स्कूल में जॉब है और आज बच्चों की छुट्टी है, तो हम प्रिंसिपल को कह देंगे जी स्टूडेंट तो है नहीं, मैं किस लिए आऊंगा, मैं तो नहीं आ रहा. कैन वी से? तो रखी जाती है प्री सर्विस. प्री सर्विस और सर्विस आपस में जुड़े हैं. जो चीज आपको ट्रेनिंग में हम ना सिखा सके और आप जो सीख ना सके, भूल जाइएगा कि यहाँ आपको आ जाएगी, नहीं आएगी. इट्स ट्रेनिंग. दैट्स आवर फोर्सेस. ट्रेनिंग भारत में बहुत कठिन होती है ताकि एक्चुअल वार हो तो झेल सके. और हमारे सैनिक बहुत से इसको पूरा करते हैं और सामना भी करते हैं. सिंगापुर के साथ क्या दिक्कत है, उनकी आर्मी बड़ी वेल डिसिप्लिन्ड है, लेकिन क्योंकि सिंगापुर ने कोई वॉर नहीं लड़ी है तो एक्चुअल एक्सपीरियंस. और हमारा तो अनुभव खैर है ही, इधर चीन इधर पाकिस्तान, हम तो हर वक्त स्टेक पे लगे हुए हैं. ये तो कहने का अर्थ है कि अगर आपको ट्रेनिंग में कुछ नहीं सीखा आपने अंदर, यहाँ करके आप नहीं सीख पाएंगे. सो बी वेरी केयरफुल कि अगर आप जॉब मार्केट में जाना चाहते हैं, आपको जॉब चाहिए, आपको शिकायत है, और देखिए स्किल भी है, ये भी अपने को टटोलने की जरूरत है. सो अब स्किल का पहला तो मानता हूं कि क्वालिफिकेशन एक रेगुलर मोड में हो तो वो बेहतर है कि आप MBA हिस्ट्री कर रहे हैं और आप बैग उठा के उस कॉलेज में 3 साल तक गए थे. हैट्स ऑफ टू यू रादर देन गोइंग फॉर डिस्टेंस मोड ऑफ कोर्स. कई लोग ये 1.5 डिग्री, ये रेगुलर कोर्स है और ये कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स है. तो हम आपसे ये भी उम्मीद करते हैं कि जब आप एट ए टाइम एक कोर्स करते हैं तो आपकी अटेंशन उस एक कोर्स में है. अब 1.5 कोर्स कर रहे हैं तो अटेंशन आपकी बढ़ी हुई है. लीगली आप उसे कर सकते हैं, वी डोंट डिनाई, बट वी डोंट प्रेफर सच स्टूडेंट्स जो एट ए टाइम 2 कोर्स करते हैं. उसे प्रेफर करते हैं जो एट ए टाइम एक कोर्स करता है, फुल टाइम करता है. टीचिंग इज सो सेंसिटिव प्रोफेशन. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस आइडियोलॉजी. So investment in higher education important, as HEI higher education institution, they provide world leaders, scientists, businessmen, सारा इसके अंदर लिखा हुआ है, who chart
ए सोसाइटी इज कल्चरल, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल फ्यूचर, जो उस सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और केवल HEI ही नहीं, किसी कंट्री की ह्यूमन कैपिटल, हमारे देखिए ज्यादा पॉपुलेशन का फायदा यह है कि वहां ह्यूमन रिसोर्स ज्यादा है, उतने चांस के ज्यादा है। चाइना ने इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझा और देखिए कि हर ओलंपिक वगैरह में वो फर्स्ट रहा, आर्मी उसकी देखिए, उन्होंने उसको ऑर्गेनाइज करके निकाला। तो इशारा इसी तरफ हो रहा है कि ह्यूमन कैपिटल को आप हार्नेस करना सीखिए थ्रू दिस प्रोसेस ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन। मेरिट्स क्या है किसकी? इंटरनेशनलाइजेशन एजुकेशन की, ये फैकल्टी स्टूडेंट की इंटर कल्चरल अवेयरनेस होती है। मैं भारत के एक राज्य में गया था, वहां के 12th क्लास के बच्चे को ये नहीं पता था कि उसके घर के आसपास कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है। मुझे पता था, मैं झूठ नहीं कहूंगा, विकिपीडिया मैंने पे देखा, वो नहीं बता पा रहा था। मैं क्या आपके पास मोबाइल है, मोबाइल से नहीं देखते? कहता है इसमें क्या पता लगेगा। मैं कहता और कहां से पता लगेगा, जब मैं बाहर से आके आपको अभी गिना देता हूं तो वो कैसे सी द लेवल ऑफ थिंग्स। 12th क्लास का बच्चा। तो इसी तरह और लोगों को भी देखा कि आज कुएं का मेंढक बनने की जरूरत नहीं है। अवेयरनेस रखिए आपके आसपास क्या हो रहा है। आप सभी डाटाबेस देखते होंगे, लेकिन मैंने एयर इंडिया 182 कहा तो नाम भी कईयों ने नहीं सुना। जब ये पढ़ लीजिएगा, इसका इंडिया से भी कनेक्शन है। एयर इंडिया तो है ही है, कुछ और भी कहानी आएगी सामने, देखिए आज वीकेंड है, जाके पढ़िएगा, उस मूवी को देखिएगा। सो इट इंप्रूव्स प्रोग्राम आउटकम्स टू मीट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ग्लोबल मार्केट। आप ग्लोबल मार्केट में कैसे टिकना, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? मैं फिर बोलता हूँ, हल्दीराम आपको यहाँ पंजाबी बाग में मिल जाएगा और हल्दीराम लंदन में भी है। दैट्स इट, दैट्स ग्लोबलाइजेशन। मारुति के सर्विस सेंटर यहां पर भी हैं और बद्रीनाथ की पहाड़े पर भी हैं, दैट्स ग्लोबलाइजेशन। क्या आप जियोग्राफिकल कंस्ट्रेंट्स को ओवरकम कर रहे हैं, बॉर्डर कंस्ट्रेंट्स को आप ओवरकम कर रहे हैं, इसे ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये मलेशिया और सिंगापुर में भी इनकी ब्रांचेस हैं, टू बी नोटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये भी ग्लोबलाइजेशन का इशारा। तो ग्लोबल मार्केट यही कह रही है कि एजुकेशन एक जरिया है कि हम ग्लोबल मार्केट में अपनी पहचान बनाएं। बिजनेस तो है ही है इसके अंदर। बिजनेस के अंदर ये होता है कि मोस्ट फेवर्ड नेशन एक टर्म चलती है हमारे यहाँ। इंडिया ने पाकिस्तान को दर्जा दिया है, बट हमें नहीं मिला हुआ। इसका मतलब होता है कि अगर ट्रेड होगा तो हम इस कंट्री को सबसे पहले प्रेफरेंस देंगे। हमारा साफ सी बात है, बिजनेस है, क्योंकि हमारे पास ही, हमें ट्रैवलिंग फ्यूल का खर्चा हमारा इतना नहीं आएगा। बट वो अपने पॉलिटिकल एजेंडा में उलझे हुए हैं, जिद पर है, तो ठीक है, भुगतिए, पर नुकसान आप ही का ही है। इंडिया और कनाडा के अंदर अभी पीछे साल भर पहले कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ, अभी भी चला आ रहा है, लेकिन ये लंबे समय तक इसलिए नहीं चल सकता क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में दोनों ऐसी जगह खड़े हैं कि जो चीज हमें चाहिए वो उनके पास है, जो उन्हें चाहिए वो हमारे पास है। दैट्स व्हाई। लेकिन चाइना से हमारी टक्कर बराबर हो जाती है, क्योंकि जो चीज हमारे पास है वही चीज उनके पास है, तो हम दोनों एक ही चीज को आगे सेल कर। तो ऐसे पकड़ में आती हैं बातें कि हमारे किसी कंट्री के साथ रिलेशन क्या हुआ। एनहेंसेस ग्रेजुएट्स नेशनल रीजनल, सारे पॉइंट्स आपके लिखे। मोबिलिटी, आज आप स्कूल लेवल पर भी आप किसी कंट्री में जा सकते हैं। बाकी यूजी पीजी डॉक्टर लेवल तो है ही इसके अंदर है, पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप लेवल पे भी हो सकता है। फैकल्टी मेंबर मोबिलिटी एंड एक्सपर्टाइज, रिसर्च भी कर सकते हैं कि आप कुछ समय वहां जाकर के, हमारे यहाँ से फैकल्टी गई हैं, क्या वहां इतने समय तक आप रहिए, रिसर्च करके आइए, MOU होता है। देन हेल्प स्टूडेंट्स फैकल्टी बिकम ग्लोबल सिटीजन, आप उनकी कल्चर को देखते हैं, समझते हैं, कुछ अपने अंदर तो लाइए। बट डू वी डू सो? आंसर इज सर्टेनली नॉट। वी गो ओनली फॉर टूरिज्म एंड विजिटिंग पर्पस। अभी ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया की 2 स्टेट्स, नाम नहीं बोलूंगा, उनके वीजा पे रोक लगाई क्योंकि स्टूडेंट वीजा के नाम पे बिजनेस करने लगते हैं। अगर इन 2 स्टेट्स के होंगे तो कहते हैं या तो इन्हें इन पर्सन बुलाइए, हम इंटरव्यू करेंगे, इन्हें देखना चाहते हैं, और वहां फॉलो अप इनका कि वहां कहां गए उन 2 स्टेट्स के। बाकी इट्स ओके। और कुछ समय पे होल्ड भी लगा था हमारे यहाँ के वीजा का, स्टूडेंट वीजा का डिले कर रहे थे क्योंकि मिसयूज होना शुरू हो गया। दूसरा, इट कंट्रीब्यूट्स टू इंप्रूव्ड मेजर्स ऑफ करिकुलम एंड इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉडिफिकेशन। हमारे यहाँ MCD में साफ कैसी होनी चाहिए, तो ब्राजील में जाते थे हमारे यहाँ के काउंसलर, स्विट्जरलैंड जाते थे गर्मियों के मौसम के अंदर जब भारत में होती थी। तो इसी तरह एजुकेशन के अंदर भी हम देखने जाते हैं कि जी वहां पर क्या सिस्टम चल रहा है। बट क्वेश्चन हम इसे फिनलैंड बना सके, हम सिंगापुर बना सके। जत्थों के जत्थे गए हमारे दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर, हार्वर्ड गए, कैम्ब्रिज गए, ऑक्सफोर्ड गए, सिंगापुर गए, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन आज भी सिस्टम वही है कि बच्चों को एग्जाम में रटना पड़ता है, नंबर कम आए तो फेल हो जाता है, प्रेशर अभी भी है। देख लीजिए कोटा फैक्ट्री, सब कुछ आपके सामने क्या हो रहा है। क्यों आखिर हमने प्रेशर डाला? वहां तो ऐसा नहीं है। एक यूनिवर्सिटी के अंदर अभी मुझे पता लगा था कि कोई एंट्रेंस नहीं है, आप B.Ed में सीधा एडमिशन ले, ये फीस भरिए और चलिए एडमिशन हो गया। आप एक्सेप्ट करेंगे इस बात को?
यार चलता आदमी है, पैसे दे और बीएड कर ले, कोई क्राइटेरिया नहीं है। और हमारी बीएड में भी क्या क्राइटेरिया बताइए, इंटेलिजेंस का है, रीजनिंग का है, इंग्लिश का है, जनरल नॉलेज का है। तो ये काम तो एक सिविल सर्विस के एग्जाम में भी होता है। सो दैट मींस द पर्सन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विसेज आपका एग्जाम तो बड़े अच्छा क्रैक कर जाएगा। तो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड तो होगा या टीचिंग एप्टीट्यूड होगा, दैट्स क्वेश्चनेबल। और हमारे यहाँ एनीबॉडी विद 50% मार्क्स कैन बिकम ए टीचर, जबकि होना चाहिए था कि बेस्ट टैलेंट शुड बी देयर इन आवर टीचिंग प्रोफेशन विद नो कंप्रोमाइज। जिसका खुद का ही आईक्यू 50% है, वो 90% वाले आईक्यू बच्चे को पुश कर देगा। ये भी एक वजह है कि जब बच्चे फिर नहीं टिकते हैं, फिर कहते हैं क्या है सब, द पर्सन कांट टीच टू अस। ये भी ब्रेन ड्रेन आएगी बात आगे, इसका कारण होता है ब्रेन ड्रेन, यहाँ से टैलेंट का जाना, एक होता है ब्रेन गेन, उनका हमारा वापस लौट करके आना है। मैं इस पर भी उठाऊंगा इसके अंदर। तो फैकल्टी को हमें ग्लोबल सिटीजन बनाने की जरूरत है, टीचिंग उसकी मैच्योर करने की जरूरत है। और दूसरा, स्ट्रेंथन्स द रिवार्ड सिस्टम फॉर फैकल्टी एम्प्लॉयमेंट। अगर आपका फॉरेन से फेलोशिप है, इट विल काउंटेड, दैट मींस यू वर्क विद देम, तो वहां का सीखा हुआ कुछ आप यहाँ लाएंगे। मुझसे भी पूछा गया, आप इतना गए बाहर, आपने क्या चीजें क्लास में इंप्लीमेंट की, तो मैंने उसका जवाब दिया, मैंने 2 चीजें इंप्लीमेंट की। आई थिंक दी स्टूडेंट्स मस्ट बी नोइंग कि मेटा कॉग्निशन पे मैंने काम किया, कि जब पढ़ाने के बाद जब मैं इनसे 2 क्वेश्चन बनाने को कहता था, जरा बताइए, और फिर ये अपना पता लगता था। दैट इज मेटा कॉग्निटिव स्ट्रेटजी। नाउ यू आर टीचर, आई एम योर स्टूडेंट, नाउ टीच मी थ्रू दिस क्वेश्चंस। वो क्वेश्चन आप जो बनाएंगे, वो सेंटेंस फॉर्मेशन जो होगी, वो आपकी कॉग्निटिव स्ट्रक्चर होगी उस कंसेप्ट को लेकर। दूसरा, मैं आपसे ये नहीं कह सकता, से मैं ये तो कह सकता हूं कि चप्पल बाहर उतार के आइए, बट मैं नहीं कह सकता कि अपनी कल्चर को बाहर छोड़ के आइए और लर्न विद मी 2 1 2 2 2 4 2 3 6 एंड सो ऑन। आई कांट से कल्चर आपके साथ है कि नहीं कर सकता मैं, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी कॉन्टिन्यूअस है, इसे स्विच ऑन ऑफ नहीं कर सकते हम। अभी लड़ाई कुछ यहाँ हो जाए तो आप बाहर कमरे से निकल के आप होंगे एकदम से, वो रेपरकशन जाएंगी, बाहर की इधर आएगी। पर्सनैलिटी इज कॉन्टिन्यूअस। ये कंप्यूटर की फाइल नहीं है कि मैं डिलीट कर दूंगा, तो चीजें यहाँ रहेंगी। सिमिलरली कल्चर आपके साथ आएगी, सिर्फ उसे हार्नेस करके, उसका दोहन करके, उसका यूज करके हमें आपको टीच करना है। दैट इज अ कल्चरल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। ये 2 बातें अभी तक तो मैं सीख सका हूं। दूसरा, इट इंप्रूव्स लैंग्वेज स्किल्स ऑफ स्टूडेंट। सर्टेनली एसेंट आपका क्या है, फिनेटिक्स आपके क्या है, ये काम चलाओ इंग्लिश ये नहीं चलेगी, और थोड़ा सा इसमें करिए। बाहर एक चीज मैंने और देखी है, मैथमेटिक्स लोगों का वीक है। मैं मैथमेटिकल कांग्रेस में गया था, तो खैर माय पेपर वाज सिलेक्टेड, बट रेस्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया में देख रहा था कि जैसे ही उनको डॉलर की बात करते हो फिंगर पे बस एकदम से आखिर में कैलकुलेटर निकाल के उस पे भी गलती। मैं कहा ब्रदर स्टॉप, दिस मच इज द अमाउंट। हाँ एग्जैक्टली, दिस मच इज द अमाउंट। सो इसकी भी एक जरूरत है। काइंडली मैथमेटिक्स को कहता हूं, अपने को मेंटली फिट रखने के लिए मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस कीजिएगा, चाहे 10वीं क्लास तक पढ़ा था तो था। कैसे मार्केट में जाए तो बजाय इसके कैलकुलेटर निकाले के करिए मेंटली ऐसा। मोबाइल नंबर याद रखिए अपने फैमिली मेंबर्स के, कम से कम 10 लोगों के आपको मोबाइल नंबर याद होने चाहिए। मोर यू गो फॉर न्यूमरेसी कैलकुलेशन, मोर योर माइंड बिकम्स फंक्शनल। तो ये अभी तक की बातें समझ में आई है। सो मैं अपना तो यही कह सकता हूं कि इंटरनेशनल एक्सपोजर का ये रहा, एनहेंसेस द इंटरनेशनल कैरेक्टर ऑफ रिसर्च। ये जो बात अभी बोली है मैंने, मेरी डेजर्टेशन के अंदर अभी इन्होंने बोला, एक्चुअली 105 एमएड डेजर्टेशन हुई है, 7 एमएड पीएचडी थीसिस सबमिट हुई है अभी अंडर, 3 अभी और आ रही हैं। तो इसमें जो रिसर्च वर्क चल रहा है अभी भी, आई एम फोकसिंग ऑन दैट कल्चरल डायमेंशंस एज वेल एज मेटाकॉग्निशन। ज्यादातर थीसिस वर्क मेरा इन पर आ रहा है, मैं कह दूं इस बात को क्योंकि मैंने बाहर से सीखा। दूसरा, कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन, इंप्रूव्स द नेशंस कल्चर, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल विजिबिलिटी। जितना आप बाहर जाएंगे, कोलैबोरेट करेंगे, ट्राई कलर तो आप पे लहराएगा ही। कितना अच्छा लगा था, मुझे बड़ी खुशी हुई, हम ताइवान में जब गए थे तो ट्राई कलर के नीचे मैं खड़ा हुआ था, आई वाज रिप्रेजेंटिंग माय कंट्री। यहाँ जब लगता है आपके यहाँ पे तिरंगा, तब महसूस होता है कि इसकी क्या बात है, वी आर रिप्रेजेंटेड द कंट्री। वहां आपको नाम से नहीं बुलाया था, द रिसर्च पेपर फ्रॉम इंडिया, यू आर सेड लाइक दिस। कंट्री की ग्लोरी तो फिर ग्लोरीफाई होगी ही अगर आप वहां रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लिमिटेशंस भी हैं, ऐसा नहीं है कि सब कुछ है। ब्रेन ड्रेन है, कहा ना यहां से टैलेंट चला जाता है जब वो सेटिस्फाइड नहीं होता। बेनिफिट्स ये है कि समटाइम्स कुछ आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट और फैकल्टी तक ही है, एक एवरेज बच्चा नहीं जाएगा। इसमें पैसा, इकोनॉमिक कंडीशन भी, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द फैमिली भी एक रुकावट आएगी। ठीक है, लोन भी स्पॉन्सर इतना नहीं कर पा रहा कि हम बच्चे को भेजें, नहीं हो पाता। तो ये कुछ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं कि आप चाह के भी नहीं जा सकते। दूसरा, इससे एक स्टूडेंट फैकल्टी की एक नेशनल एंगेजमेंट डाइल्यूट होती है व्हेन वी बिकम कंसर्न्ड विद अदर्स। जब हम उन्हें छोड़ के, अपने को छोड़ के उधर चले जाते हैं,
वहीं सब कुछ अच्छा दिखने लगता है, तो कुछ फिर अपनी सॉइल से हम दूर होते जाते हैं, कंसर्न हमारा खत्म होता जाता है। और कई लोगों को मैंने वहां कहते भी सुना, मैं कहा यू आर फ्रॉम इंडिया, कहता आई डोंट कम फ्रॉम इंडिया। मैं कहता फ्रॉम वेयर आर यू नाउ, कहता आई रिप्रेजेंट दिस कंट्री। नेशनैलिटी इंडिया की थी, पढ़े भी यहीं से, सब गए, समय का खेल बदला, उस कंट्री की नेशनैलिटी ले ली और अब उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चलिए ये एडमिनिस्ट्रेटिवली ऑन पेपर ठीक है, लेकिन कहीं दुख होता है जब कोई ऐसे बोलता है आई डोंट कम फ्रॉम इंडिया। अपनी मिट्टी को छोड़ के हम ऐसे बोल रहे हैं, बट इन रिप्लाई आई सेड आई एम फ्रॉम इंडिया। मैं कहा पूछिए क्या पूछना है, फिर आगे बात चली। सो एडवर्स इफेक्ट्स ऑन जॉब मार्केट, अगर इस तरह से आपके बच्चे बाहर जाते रहे, जॉब मार्केट में भी आपका खाली स्थान उत्पन्न हो जाएगा। कारण क्या है, जॉब क्रिएट नहीं होंगी, और जो क्रिएट होंगी तो क्या उसके पोटेंशियल का बच्चा है हमारे पास, हमें इस बात को देखना होगा। आज हर बात के ऊपर आपको गूगल पे डिक्शनरी ऑन करते ही मिल जाएगी, व्हाट्सएप पे भी। तो जब हम एप्लीकेशन लिखवाते हैं ना बच्चों से, जरा कागज पे लिखना, तो स्पेलिंग की जो मिस्टेक देखने को मिलती हैं कि MA BEd वाला लिख रहा होता है तो उससे अच्छी एप्लीकेशन एक 8th क्लास का स्टूडेंट लिख रहा होता है, क्योंकि डिक्शनरी जो ऑन हो गई है इसने हमें स्पेल चेक की आदत को भी खत्म कर दिया, हमारी सेंटेंस फॉर्मेशन को भी करा है। गूगल ट्रांसलेट ने भी हमारी इस आदत को किल किया है, नॉट एबल टू ट्रांसलेट। सो बी वेरी केयरफुल व्हाइल यूजिंग टेक्नोलॉजी। ये आप पे ही पलटवार करनी ना शुरू कर दें। देन इलिटिसिज्म ऑफ ग्रेजुएट्स फ्रॉम डेवलप्ड कंट्री, जो डेवलप्ड कंट्री में गया है बच्चा भारत से, एक वो अपने समझने लगता है, आइसोलेटेड समझने लगता है, एलूफ समझने लगता है, और थोड़े टाइम बाद वो फिर NRIs में आ जाते हैं, इंडियंस ऑफ ओवरसीज ओरिजिन उसमें चले जाते हैं, और लास्ट में ही वहां की PR ही मिल जाती है। तो ये इस तरह के खतरे भी इसमें देखने को मिलेंगे, एक इलिटिज्म क्रिएट हो गया है। देन इंडियन सिनेरियो के अंदर आया कि भारत के अंदर ज्यादातर स्टेम कोर्सेज के, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैनेजमेंट कोर्सेज के बच्चे बाहर जा रहे हैं, और मैनेजमेंट के बच्चों का जाना इस कोई नई बात नहीं है। ज्यादातर जो ड्रिफ्ट हुआ है यहाँ से साइंस स्ट्रीम का, फॉलोड बाय बिजनेस स्टडीज एंड देन ह्यूमैनिटीज के बच्चों का, ये यहाँ से हमारे यहाँ से ड्रिफ्ट जो आपको देखने को मिलेगा। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के मुताबिक 73% हाइक हुआ है पिछले नवंबर 23 से, आज अगस्त चल रहा है, 73% हाइक, मतलब समझो बंदा नहीं बचा होगा यहाँ पर कोई, इतना हाइक हुआ है इसके अंदर, यहाँ से बच्चों का वहां जाना। सो इंडियन गवर्नमेंट अब काम कर रही है, UGC भी ला रही है ड्राफ्ट में, इस पे बात करूंगा इसके अंदर, कि उल्टा हो। अभी तक की जो फिगर थी, 7 लाख बच्चे हर साल भारत से विदेशों में जाते थे, और 47,000 स्टूडेंट्स बाहर से यहाँ आते थे, सीधा ट्रेंड। तो इंडियन गवर्नमेंट भी कर रही है, तो इसके अंदर कोलैबोरेशन आ रही है, IITs, IIMs, IIS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज, ये सब इसमें आ गया है। मैं दिखाऊंगा भी आपको कैसे कोलैबोरेशन हो रहा है कि फॉरेन का टैलेंट भी यहाँ आए, और ठीक है हम फेलोशिप, हम कोलैबोरेशन करेंगे उनके साथ कि हमारे स्टूडेंट पढ़ने जाएं, लौट के फिर वो वापस आए, ना कि इसके वहीं के वहीं रह जाए। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटीज, इसका गिफ्ट गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी, इन्होंने टॉप फॉरेन यूनिवर्सिटीज जिनकी QS 500 रैंकिंग है, कि इनके कैंपस यहाँ पर हो। क्योंकि हमारे यहाँ एक चीज की बड़ी दिक्कत है, जब तक हमारे यहाँ रेगुलेटरी बॉडी के नॉर्म्स कोई यूनिवर्सिटी पूरा नहीं करेगी, वो कैंपस नहीं खोल सकती। जैसे एजुकेशन की रेगुलेटरी बॉडी NCTE है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, AICT इंजीनियरिंग की है, BCI लॉ की है, वगैरह वगैरह। तो इनके नॉर्म्स पूरे करना भी कोई इतना आसान काम थोड़ा सा भी नहीं है। UGC का ड्राफ्ट रेगुलेशन आ रहा है, जिसके अंदर ट्रेनिंग ज्वाइंट ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम, ये NEP 2020 ने भी बोला है इसमें ये दिया जाए। इंडियन सिनेरियो ये कहता है कि NEP 2020 ने, इसने बहुत से प्रोविजन दिए कि रिसर्च, टीचिंग नहीं, रिसर्च, पहले उन्होंने बोला रिसर्च और टीचिंग कोलैबोरेशन हो, फैकल्टी स्टूडेंट कोलैबोरेशन हो, और ये कैसे हो, बाय साइनिंग MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस होगा हर HEI के अंदर, हमारा इसमें है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कह दिया, फॉर वेलकमिंग एंड सपोर्टिंग फॉरेन स्टूडेंट्स। और ज्ञान ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क, इसका नाम दिया गया है। ये रेप्यूटेड फैकल्टी ऑफ फॉरेन शुड बी वेलकम हियर, ये ध्यान देगा इसकी तरफ कि फॉरेन की कौन सी फैकल्टी है रेप्यूटेड, उसको हम भारत में लाएं। तो वो प्रोफेसर जैसे 4 महीने के लिए इंडिया में होगा, किसी सेमेस्टर के लिए यहाँ पर होंगे, तो फैकल्टी और स्टूडेंट उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, ये इसके अंदर आ रहा है। भारत का ब्रेन ड्रेन इंडेक्स देख लीजिए 2016 से 2023 तक का,
ग्रीन में लिखने का मतलब है कि ये हमारा लो हुआ है, और रेड में लिखने का मतलब ये हाईएस्ट है। 6.4 हाईएस्ट था 2018 में, और 4.9 देखिए इस टाइम लोएस्ट चल रहा है। इसकी वजह क्या हुई है कि हमारे यहाँ IITs और IIMs ने काफी कोलैबोरेशन किया, तो बच्चे बाहर नहीं जा रहे, यही चल रहा है। इवन IIT आपका खड़गपुर ने भी, जैसे कई जगह इन्होंने बाहर की यूनिवर्सिटी से भी कैंपस में कोलैबोरेशन किए, ऑफ कैंपस एस्टैब्लिश किए हैं, ताकि इनके स्टूडेंट वहां जाकर के स्टडी कर सकें। तो आप यहाँ पाएंगे पेंडेमिक में थोड़ा सा ये डाउन आया फिगर 2020 में, और 21 में भी, 2 में भी, तो डाउन ही आता चला आ रहा है, वरना बिफोर पेंडेमिक इट वाज एट इट्स पीक दिस ब्रेन ड्रेन इंडेक्स। प्रेफर्ड कंट्री नो नीड टू से, आपके सामने लिखे हैं US, UK, सिंगापुर वगैरह सब लिखा है। टू माय सरप्राइज किर्गिस्तान भी एक कंट्री है जिसमें हम जाना पसंद करते हैं, और इसमें ये भी बात ऑफ द रिकॉर्ड पता लगी कि हमारे मेडिकल कोर्सेज के बच्चे जब जाते हैं वो रशियन बोलते हैं वहां पर, तो वो सुन लेते हैं, देख लेते हैं, लेकिन लेक्चर में बोला क्या था वो यूट्यूब पे वीडियो देख करके समझते हैं क्या हुआ क्या। लैंग्वेज इज ए बैरियर। तो ये वहां पर ये बातें ऑब्जर्वेशन में आ रही हैं। लीस्ट प्रेफर्ड कंट्रीज फॉर इंडियन स्टूडेंट्स आर इंडोनेशिया, क्यूबा, सूडान, सर्बिया, वियतनाम। इनमें जाना पसंद नहीं करते बच्चे। ये लेस देन 0.5% बच्चे हैं भारत के, और टोटल 17 कंट्रीज ऐसी हैं जिनमें भारतीय विद्यार्थी साल 2022 में गए थे। 78 कंट्रीज हैं, और ये टॉप 10 है जो ऊपर मैंने आपके सामने लिखी हैं, जिनमें से कई में मैं जा चुका हूं, विजिट कर चुका हूं। अब फॉरेन यूनिवर्सिटीज क्यों इसके अंदर, आखिर क्या ट्रिगर करता है? सबसे बड़ी बात यही है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। नो, व्हाट इज क्वालिटी? क्वालिटी क्या है? क्वालिटी का मतलब होता है कि एक चीज जिस काम के लिए बनी है क्या वो उसको पूरा कर रही है। एक खाना है, खाने के क्या क्राइटेरिया क्वालिटी के? हेल्दी हो और टेस्टी हो और चीप हो। 3 चीजें होंगी तब है। हेल्दी हो, आपको नुकसान ना दे, टेस्टी हो और सस्ता हो। इनमें से एक हटा दीजिए, इसकी क्वालिटी में फर्क पड़ जाएगा। टीचिंग की क्वालिटी क्या होती है? कुछ समझ में आई है? टीचिंग की ये क्वालिटी है कि क्या वो आपको सोचने पे मजबूर कर देती है। दैट्स क्वालिटी ऑफ टीचिंग, नथिंग मोर देन दैट। वरना खाली आप घड़ी देखें, यार कब सैटरडे का दिन है, 3:30 हो गए, बोले जा रहे हैं, लंच हो गया, थक गए, नींद आ रही है, तो दैट मीन्स इनका बुलाना बेकार, मेरा बोलना बेकार, आपका बैठना बेकार, दैट्स यूजलेस। बट इफ वी बिहेव लाइक ए मैच्योर पर्सन, कोई बात नहीं, संडे का दिन है, रेस्ट कर लेंगे। इफ आई कम टू लर्न 2-3 थिंग्स, somewhere in future it will improve my teaching, because someday I'll be here also, I may be here. That should be the vision for the life. तो क्वालिटी एजुकेशन की थोड़ी शिकायत रही है जिनको, बेटर लाइफस्टाइल, कैरियर एडवांसमेंट, नेटवर्किंग, इंटरनेशनल एक्सपो। बेटर लाइफस्टाइल तो यही है कि जैसे रोड सिस्टम पे हम जाएं, अभी जो कोई देखते हैं जिस ढंग से हॉर्न हॉकिंग करना, साइड ना देना, लेन में गाड़ी ना चलाना, लड़ाई झगड़े होना वगैरह वगैरह, वहां ऐसा सिस्टम नहीं है। स्ट्रिक्ट लॉज है वहां, खास तौर से ट्रैफिक के। यहां से अब आपने रेड लाइट आपने जंप की, अगली लाइट पे आपके SMS आ जाएगा आपने चालान करा। सऊदी अरब जैसी कंट्री, जहां मक्का मदीना जैसी जगहें हैं पवित्र, वहां पर वो पूरी सिस्टम सर्विलांस CCTV से करते हैं। कहते हैं पुलिस वाले कहां खड़े करेंगे, सर्विलांस से करते हैं, जैसे ही कोई फॉल्ट होता है एकदम पहुंचते। तो लॉज इंपोज करने पड़ेंगे। लॉज हमारे पास भी हैं। निर्भया का केस हुआ था, उम्मीद है नाम ध्यान होगा, कुछ हुआ था तो कुछ बात चली, तो एक लॉयर ने क्लियर किया भारत में लॉज हैं बियॉन्ड एनी डाउट, जैसा आप चाहते हैं। प्रॉब्लम क्या है? इंप्लीमेंट नहीं है पूरी तरह, दैट्स इट। इस वजह से थोड़ा सा एक क्राइम को या एक बुराई को आगे बढ़ने का मौका मिल जाता है, वरना लॉज हमारे यहाँ पूरे हैं। So Indian students pursue higher studies not only in Europe, Canada, Western Europe, China, South Korea, Taiwan and other countries में भी जाते हैं, और मेडिकल डिग्री के लिए भी हमारे बच्चे इवन यूक्रेन तक जाने लगे हैं, जिसकी कीमत वो चुका भी रहे हैं, देख सकते हैं इसके अंदर। और ये जो वेव आई हुई है स्टूडेंट्स के जाने की, ये आने वाले टाइम में कम नहीं होगी। फॉरेन स्टूडेंट्स जो भारत में आते हैं, देख लीजिए नेपाल के 28% हैं, अफगानिस्तान से भी आते हैं, बांग्लादेश, भूटान, UAE से मैंने आपसे बोला, इन कंट्रीज से आते हैं। और सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी हमारी है, इसके अंदर मैक्सिमम फॉरेन स्टूडेंट्स हमारे यहाँ एनरोल्ड हैं। और IIT बॉम्बे का ग्लोबल रैंक 118 है वर्ल्ड लेवल पे, हैट्स ऑफ टू देम। और IIS इन बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर हैज मैक्सिमम मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद फॉरेन यूनिवर्सिटीज, ये इसके अंदर आ रहा है। अब आपकी G20 की अगर मैं बात करूं, G20 ने इसमें यही बोला कि 4 प्रायोरिटी एरियाज होने चाहिए। लास्ट ईयर सितंबर में हुआ था हमारे यहाँ पर, उन्होंने ये बोला कि इंश्योरिंग बेसिक लिटरेसी और न्यूमरेसी की बात होगी आपकी एजुकेशन के अंदर। दूसरा, मेक टेक एनेबल्ड लर्निंग
टेक्नोलॉजी तो है हमारे पास, सब कुछ है, लेकिन इंक्लूसिव हो। व्हाट इज इंक्लूजन? हम हमेशा डिसेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में इंक्लूजन देखते हैं, फिजिकल डिसेबिलिटी, बट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी है कि यहाँ हर तरह के आईक्यू के लोग बैठे हैं, बिलो एवरेज, एवरेज एंड अबव एवरेज। तो मुझे एज ए टीचर उन तीनों को अपने साथ लेना होगा, दैट इज आल्सो इंक्लूजन। So kindly don't go for the word disability with respect to inclusion. So inclusion setup की बात हो, क्वालिटेटिव, मैंने आपसे बात की, क्वालिटी मींस द थिंग, अगर वो आपको चीज दे रही है तो क्वालिटी है, अदरवाइज नहीं है उसके अंदर। कोलैबोरेटिव, कोलैबोरेटिव का मतलब कि आप दूसरों के आइडियाज को भी जगह देते हैं। आजकल इससे बहुत काम चल रहा है कि 2-3 अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग, मैनेजमेंट, एजुकेशन, लॉ एंड सो ऑन, रिसर्च करें, उसकी वैल्यू ज्यादा है, ताकि आपको अलग सोच का एक जरिया मिल सके। तो ये G20 ने बोला कि इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, इन 4 कुछ बातों के ऊपर ध्यान देना है। प्रमोट इंक्लूजन, प्रमोट कोलैबोरेशन, प्रमोट डाइवर्सिटी, प्रमोट क्वालिटी, बिल्डिंग कैपेसिटी, प्रमोटिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग, इन सब पर इन्होंने बात, मुद्दे को मोड़ी। और रिसर्च के ऊपर, किसी भी यूनिवर्सिटी की पहचान उसकी रिसर्च से होती है। लेकिन मुझे जब दुख होता है सेशन में, जब सुनता हूं कोई बुक्स में नाम लिखा होता है, रिसोर्स पर्सन भी बोलते हैं, रिसर्च मींस री प्लस सर्च, यानी कि सर्च को दोबारा करना। कभी आपको मिलेंगे ऐसे शब्द देखने को? तो मैं बता दूं कि इंग्लिश के अंदर एटाइमोलॉजिकली संधि विच्छेद अलाउड नहीं है। इट्स ए रोमन फैमिली लैंग्वेज। केवल आपका देवनागरी लिपि, जिसमें हिंदी, आपके मराठी लैंग्वेज है, गुरमुखी पंजाबी में है जैसे, तो इन संस्कृत में भी है, इनमें संधि विच्छेद हो सकता है, बाकी किसी भाषा में संधि विच्छेद नहीं है। जब रिसोर्स पर्सन को यही नहीं पता कि रिसर्च का स्प्लिटिंग पॉसिबल नहीं है, एंड द पर्सन टीचेस री प्लस सर्च, तो फिर आगे मैं रिसर्च की क्या बात करूं? मैं उस बुक को क्या मैं पढ़ूं? तो क्वालिटी रिसर्च हमारे लिए जरूरी है। रिसर्च पढ़ाना अलग है, रिसर्च करना एक अलग बात होती है। वहां बाहर यही बात है कि एक आदमी रिसर्चर है, अगला आदमी टीचर है, तीसरा आदमी एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखता है। रिसर्चर अपने इनपुट्स टीचर को देता है, टीचर अपनी क्लास में लगाता है। तो इस तरह से आपको फुल फ्लैट रिसर्चर भी मिलेंगे और एक हायर करते हैं फॉर कंडक्टिंग देयर रिसर्च वर्क। फोर्थ प्रायोरिटी एरिया की यही है कि पोटेंशियल ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर टू अट्रैक्ट फॉरेन स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी। आईआईटी जैसी हमारी हैं, दे स्टूडेंट्स एंजॉय द बेस्ट academic environment in their institution. I hope I'm audible and visible also. Fine. So they attract the best talent of this country and they provide them the best learning environment with respect to research. तो हम ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिवर्सिटी लेवल, नॉट आईआईटी लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल पे देंगे कि बाहर के लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट हैं। सीधी सी बात है, हमसे यहाँ से जाते हैं तो उनकी तरफ से यहाँ आने चाहिए, हमें उन्हें माहौल देना होगा। और G20 नेशंस के अंदर, ये बता दूं मैं, इसके अंदर वर्ल्ड की बेस्ट रैंक यूनिवर्सिटी इन G20 नेशंस में ही है। देख लीजिए, इसके अंदर रेड में मैंने मार्क किया हुआ है। और G20 प्रेसिडेंसी ने हार्मोनी पर इन्होंने बात की, वन अर्थ वन फैमिली, ये तो इनका लोगो रहा था। करंट सिनेरियो ये है, सॉरी टू से, कोई भी टॉप 200 यूनिवर्सिटी में भारतीय यूनिवर्सिटी नहीं है। आईआईटी बॉम्बे अलग है, लेकिन यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं, टॉप 200 में हम नहीं आते। लेकिन इसकी कई बातें हैं, कई बातें। ऐसा नहीं है कि उन्होंने पैरामीटर ऐसे बनाए हुए हैं कि जो उनको सूट करते हैं। मसलन उनकी पूरे यूरोप में आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री उनकी मेट्रो में चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। सिंगापुर आप 2.5 घंटे में मेट्रो से घूम लेंगे, और हम 2.5 घंटे में द्वारका से वैशाली तक हम नहीं जा सकते। फाइन। हमारे यहाँ से दिल्ली और त्रिवेंद्रम 2500 किलोमीटर दूर है। अगर हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी का, आईपी का, त्रिवेंद्रम से कुछ एमओयू होता है, वो काउंट नहीं होगा, क्योंकि आप एक ही कंट्री में। लेकिन वो छोटी छोटी कंट्री जो 300 किलोमीटर की दूरी पर है, उनका एमओयू हो गया तो काउंट होता है। तो ऐसे पैरामीटर से नंबर ले लेकर रैंक बन गए, और हम चाह करके भी हम नहीं हो सकते। तो कहते ना कि गेम के नियम ही ऐसे बनाए गए हैं, जो उनको सूट कर रहे हैं, दैट्स व्हाई दे आर एक्सेलिंग। हमें सूट नहीं कर रहे, दैट्स व्हाई वी आर लैकिंग। तो थोड़ा सा इसके अंदर पीछे गेम को भी समझिए। अगर 200 में नहीं है तो उसकी वजह भी है, ये नियम ऐसे कठोर बनाए गए हैं। दूसरा, इंडिया इज ओनली द ब्रिक कंट्री जिसकी टॉप ग्लोबल यूनिवर्सिटी में नहीं है। ब्रिक का मतलब ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ये ब्रिक्स का भी हुआ था एक सम्मेलन अभी 2 साल पहले, हमारे यहाँ सेंटर पड़ा था उसका दिल्ली में। तो ब्रिक्स में भारत ऐसा कंट्री है जिसकी टॉप 100 ग्लोबल यूनिवर्सिटी में नहीं आ रही है कोई भी। और कुछ और बातें लिखिए, आईवी लीग स्कूल्स लाइक येल, हार्वर्ड के हैं, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज के हैं, इनको हम इनवाइट करें कि अपने कैंपस इंडिया में स्थापित करें। ये बात चल रही है इस टाइम यूजीसी की, ऐसा हम इनके फ्रेंडली बना देंगे इसके अंदर। और 2022 के अंदर 5 लाख इंडियन स्टूडेंट्स माइग्रेट किए, जो हमारी इकोनॉमी का 28 से 30 बिलियन यूएस डॉलर में था, और 2025 में 100 यूएस बिलियन डॉलर्स का होगा। इससे हमारी इकोनॉमी पे भी फर्क पड़ता है।
इकोनॉमी को भी बातें हिला देती हैं अगर आप इतना पैसा हमारा उसमें कन्वर्ट हो रहा है, हमारा लग रहा है इन बच्चों के ऊपर। सो रिसेंटली यूजीसी ने एक ड्राफ्ट बनाया कि फॉरेन यूनिवर्सिटी आए, यानी बच्चा हमारे यहाँ ना जाए, हम ही उनको यहाँ ले आते हैं, फाइन। दूसरा, इसके अंदर फॉरेन यूनिवर्सिटी और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को ऑटोनॉमी दिलवाई जाएंगी। एक 90 डेज का अप्रूवल प्रोसेस होगा, यानी 3 महीने में अप्रूवल, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क 3 महीने मिलेगा, उसके बाद आप शुरू करिए। और दूसरा, एनईपी 2020 ने ये भी करा है कि टॉप ग्लोबल यूनिवर्सिटी को ऑपरेट वो करे। सो एनईपी का विजन यूजीसी में आया है, जो इतनी देर से ये बातचीत यहाँ पर है इसमें। और करंट सिनेरियो ये है, ये सच है कि हमारी एक प्री हिस्ट्री रही, मैंने नालंदा तक्षशिला की बातें बोली। दूसरी बात यह है कि फैक्ट भी है कि आईआईटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है हमारी, दे आर एट पार विद फॉरेन एक्सीलेंट यूनिवर्सिटी। हमारी आईआईटी कोई छोटी नहीं है। एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इनका कहते हैं ना, नाम ही काफी है। हमारे आईआईएम्स, नाम ही काफी है। ये इस दर्जे की प्रीमियम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशंस है हमारे, सिग्नेचर्ड इंस्टीट्यूशंस है हमारे। तो हम कहते हैं हमारी हर यूनिवर्सिटी ऐसी क्यों ना हो। हम यही क्यों कहेंगे कि हमारी सब यूनिवर्सिटीज हो, ये विजन है। और कोलैबोरेशन ज्ञान का, स्पार्क की भी देख लीजिए, स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन, ये यूजीसी के थ्रू काम इस पे चल रहा है कि हमारा इन फॉरेन कंट्रीज के साथ एमओयू हो, हमारे साइनिंग हो और वो कैंपस इसमें स्टैब्लिश करें। लेकिन चैलेंज भी है हमारे इसके कि टॉप फॉरेन यूनिवर्सिटी विलिंग तो हैं, लेकिन ब्रांच कैंपस उनको इंडिया में स्थापित करने होंगे। यहां थोड़ी सी दिक्कत है कि जो ब्रांचेस हम ऑफर कर रहे हैं, दे आर नॉट एक्सेप्टिंग। दूसरा, हमारा रेगुलेटरी प्रोसेस कठिन है, वो थोड़ा उसको भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। और दूसरा इसके अंदर ये है कि उनका खुद का इंक्लिनेशन कि इंडिया में कैंपस स्थापित करें, वो उनके में नहीं है। इसका मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं। जब इंडिया ने यूएन के अंदर एक मूवमेंट शुरू की कि पाकिस्तान को एक टेररिस्ट कंट्री घोषित किया जाए, जब हम पे अटैक हुए थे 2008 वगैरह में, तो यूएस वगैरह ने, या उससे पहले यूके वगैरह ने साफ कहा कि हमारे संविधान में कोई प्रोविजन नहीं है कि हम किसी कंट्री को आतंकवादी घोषित करें, हम नहीं कर सकते। ओके, चुप हो गए। लेकिन जब कुछ मुद्दा बना और यूएस ने हमला किया था तालिबान के ऊपर, तो सबसे पहले मदद करने के लिए यूके ही खड़ा था और संविधान में सबसे पहले चेंज उसी ने करा था। दैट मीन्स हम देख करके अपने नियमों को चेंज करते हैं। ये मेरे दोस्त के साथ दिक्कत है तो संविधान में चेंज है, मैं आपके साथ हूं, आप मेरे दोस्त नहीं है, मैं आपके साथ नहीं हूं, मैं इसके अंदर मैं नहीं कर सकता। तो सेम ये बात आ रही है कि उनके ऑर्डिनेंस में नहीं है, लेकिन जहां उन यूनिवर्सिटीज को जाने का मन होगा ना, वहां बात बन जाएगी। तो ये फिर थोड़ा सा एक व्हाट शुड आई से माइंडसेट कि वो काम नहीं करना चाह रहे, बाय वर्च्यू ऑफ एनीथिंग, ये कुछ हर्डल्स हैं दैट वी आर फेसिंग राइट नाउ। और की इश्यूज इसके अंदर यही आती है कि किस सब्जेक्ट के अंदर वो फॉरेन यूनिवर्सिटी अपने कोर्सेज यहां लॉन्च करेगी। ये नहीं कि पूरा कैंपस ही उठ के आ जाएगा। किस सब्जेक्ट डोमेन के अंदर, किस रिसर्च वर्क के अंदर वो अपनी कुछ फैकल्टी या अपना कैंपस यहां लगाना चाहेगा, वो हर एक के अंदर इसमें ये नहीं आएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट फ्रॉम मी। सो क्वेश्चंस आर वेलकम इफ देयर आर एनी। जी, थक गए हैं बच्चे, लगता है जाना चाहते हैं। I think we are not asking. So thank you very much. Please बोलें. Yes. हम लोग अंडरस्टैंडिंग साइन कर रहे हैं, सर को लोग आए हैं, हम लोग करें उससे हम चीज पर फोकस नहीं बोला कि आईआईटी और आईआईएम ऑलरेडी उनको प्रोवाइड, तो बाकी इंस्टीट्यूट्स पर हम ध्यान दें, वो फर्स्ट प्रायोरिटी रखें, ऐसे उनको प्राप्त करना है। 110% वैलिड सबमिशन के बजाय इसके कि हम उन तक ही सीख रहे हैं, उन्हीं का हो रहा है। हम यूनिवर्सिटी या किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए हम काम ना करें कि वो क्वालिटी इसके अंदर आए। वी आर वर्किंग ऑन दैट इज एट इंट्रा लेवल, विद इन कंट्री लेवल, कि हम यहाँ भी नियमों को कुछ फ्लेक्सिबल बनाएं ताकि हम यू कर सकें, आईआईटी यूनिवर्सिटी भी कर सकें। मैंने उसने बहुत किया, लेकिन जो क्वालिटी एजुकेशन आपको चाहिए बजाय वो वहां जाकर के मिले, आपको यहाँ मिले। वी आर वर्किंग ऑन आल्सो, एफर्ट्स आर बीइंग टेकन। मैं इसकी शुरुआत यही करता हूँ, पब्लिक बात, अगर फैकल्टी पब्लिकेशन मेरिट तो इन्हीं के आप पीयर रिव्यूड में पब्लिकेशन करा लें। स्कोपस एंड केयर में आपके पब्लिकेशन की एक्सेप्टेंस है, तो इस दिशा में काम हुआ है कि वी नीड क्वालिटी पब्लिकेशन, क्वालिटी टीचिंग। प्लेसमेंट की भी इसके अंदर फैक्टर आ रहा है, इज देयर टू फैसिलिटेट योर प्लेसमेंट। तो प्लेसमेंट जैसी चीजें भी है जो आपकी इंडिकेट करती हैं वेयर डज इट स्टैंड।
दिशाओं में काम हो रहा है। जी प्लीज वहां से। Learning is the main thing. जो बच्चों पे ज़्यादा focus किया जाता है rather than experiential learning. Right now we are actually focusing on that. But if one point of view, campus job opportunities very many. As my friend actually cleared her UGC NET and she got a job of rupees 20. So she do any opportunity. And this is the truth, sir. This is not one my friend only. There are hundreds of students who are lacking. This is the main cause why actually going towards the opportunities and we are opportunity. My cousin is living right now. She is not able to 2+2. This is the truth. She is not able. But we are the students. We are Indian students. We are having so much, and they're actually giving scholarship and fellowship for us. We can give to their country like Microsoft. We are every companies. We have a very great from our India. So, what's your opinion? It's better truth that a friend after qualifying is earning is being offered 20,000. Why doesn't she move to some other? That's the reason for brain drain. Brain drain. Another reason, you calculate 2+2 and you are. That's quality of our researcher has seen. Our students have more rigor. Don't say it's academic rigor. It's rigor in terms of their physical effort, their survival, because we can in 47 degree in Sydney. Gentlemen, you don't know how harsh temperature to say. And how much? 7 degree. 47 degree. Don't worry about that. So that's another side of the coin. But we need to work on the fact retain our own talent and stop this outflux going to other countries. First of all, I must urge to every citizen of this nation kindly have a note consideration for controlling population. That's a reason behind all the problems. That is fine. And thing is, we need to accept ourselves. Don't make tall claim yourself. Assess yourself. Are you for this job? Don't blame the system. What you have given to the rest of us, rationalize this. The answer to all these questions is positive. You deserve to be in India. Thank you. सर एक और क्वेश्चन सर जैसे आपने बोला था कि एक 50% वाला टीचर एक 90% वाले स्टूडेंट आईक्यू को मैच नहीं कर पाएगा but the truth is sir as that teacher actually cleared the exams which is basically IQ those they clear that then at that point of time they are getting a job after clearing the exam. For example, my friend cleared the CTET, my friend cleared the UGC NET. She is capable enough so that she can teach now. One thing is that unless until I have to face the entrance interview exam, I'm like is working like a scholar. But when I get a job and only after retirement I'll be expelled from this system, then why should I teach or exercise my efforts when I'm getting the same salary? Because here in our country, when you get a government job, that means up to eternity. You can extend your contract also and so on. But in foreign countries, it's a contractual. After 5 years, you will be reviewed, contract will be renewed, so you have to give your best at each step. But here you get a job, forget rest of the world. Should I give my efforts and I'm getting the salary without doing anything? Internet is there, पढ़ लीजिए, पास आपको कर ही देंगे, ठीक है? फिर क्यों मेहनत करें? प्रॉब्लम एटीट्यूड भी होना ये चाहिए कि गवर्नमेंट जॉब मिलने के बाद जिम्मेदारी और बढ़ गई क्योंकि सर्टेनिटी हो गई ना जॉब की, तो अब क्यों ना अपना बेस्ट दिया जाए। गूगल और चैट जीपीटी ये असिस्टेंट है, ये आपके घर के सर्वेंट है, ये तो कभी इस्तेमाल हो, क्या चाहे रास्ता कहाँ जा रहा है, घर के आसपास कौन सा रेस्टोरेंट है, ये ठीक है, ये है, पर मैं इसको टीचिंग के लिए यूज कर लूं मैं, ये तो कुछ ज्यादती हो जाएगी। जी Thank you so much. वेलकम। सर जैसे आपने बात की कल्चर के थ्रू हार्नेस करना एजुकेशन को, इंडिया में बहुत डाइवर्स कल्चरल बैकग्राउंड है, तो हम उसको कैसे हार्नेस कर पाएंगे? देखिए, अब एक एक कल्चर का तो मुश्किल है, लेकिन फिलहाल जो आपके स्कूल में जिस बच्चों की कल्चर है उसको आइडेंटिफाई कीजिए। आपके पास कहाँ से बच्चे आ रहे हैं, ऑब्वियसली आपके आसपास के होंगे, जस्ट लाइक दिल्ली इज ए कॉस्मोपॉलिटन कल्चर।
हमारे यहाँ पर ऐसे बच्चे हैं, तो आप उसको फोकस करके वर्कआउट कीजिए। जैसे ट्राइब्स के बच्चे तो ज्यादातर दिल्ली में नहीं मिलेंगे आपको जैसे, लेकिन रीजनल लेवल पे आपको मिल सकते हैं फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स। उसमें भी कह दूं कि नॉर्थ इंडिया के बच्चे आपको ज्यादा मिलेंगे, अब यहाँ साउथ के बच्चे यहाँ कम होंगे, एंड वाइस वर्सा, नीचे भी ऐसा ही होगा। तो इस तरीके से आप वर्कआउट करके उस पर काम कीजिए। खास तौर से ये देखिएगा what do their culture does at home for teaching their child, for facilitating the learning their child, for disciplining their child। छोटा बच्चा होता है, किसी एक परिवेश में पैदा हुआ, उसके घर वाले उसको डिसिप्लिन करने के लिए क्या सिखाते हैं, उस पर वर्कआउट कीजिए, उसको अपने सिस्टम में लाइए। एक बार कर लीजिए, काफी सालों तक आपका सिस्टम चलेगा। दैट्स इट। So thank you very much for your concern. Thank you so much, sir, for such an informative session. As you commenced your session by taking us back in time, you made us understand how the process of globalization actually started. Reiterating the fact that internationalization of education is a concept that is nothing new to India, you helped us to understand our roots. As you went on to share your past experiences as gathered by you in your remarkable journey of excellence, we constantly took notes that will be instrumental in our future. As you talked about accepting diversity, I would like to quote our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji here. Housing one-sixth of humanity and with its immense diversity of languages, religions, customs, and beliefs, India is a microcosm of the world. And thereby, we do acknowledge the indispensability of inclusive education, access, and equity here in India. Further, going through the merits of the concept of internationalization of education made us realize that it will take all of our stringent efforts to enjoy its fruits. As you drew our attention towards the glaring limitations and challenges that we may come across, it portrayed the true Indian scenario and helped us form a clear image of the same. The brain drain index, as now constantly declining post COVID, has been marked by us, sir, as a positive development for the higher education system in India. The Legunas, as enlisted by you, sir, serving as the reason for Indian students choosing foreign universities and at the same time, constant improvement in the ranking of higher education institutions here in India presented a mixed bowl in front of us, sir. As you went on to explain the internationalization of education in context of G20, it tremendously added to our knowledge. And if I may say on behalf of our audiences sitting here, once again, the slide showing the current scenario and the game plan behind the existing position that India has was an eye-opener for all of us. Thank you so much, sir, for sharing so much information in such limited time frame. And thankfully, we have it on live stream as well as recorded for us. I mean, so that we can always take notes later on. It was too much for us also to process everything in such restricted time. Thank you so much, sir. It was a pleasure having you.